Hi everyone. I cannot see if people have joined in. So if someone could say hi and confirm if they are able to hear me. So I'll wait till people have joined in, but I cannot see numbers here. So just wait for a couple of seconds. Yeah, I can see Parvati has joined in, but she's not on screen yet. Sneha is still yet to join in. But I'm assuming that, people have started joining in, guys. I'm so sorry, but I cannot see who has joined in or who has not. So, this is Khyati. Welcome to another live at YouTube. So, normally we do a lot of Instagram lives. This is, I think, our second YouTube live where we are doing kind of craft wars, you could say. And the last one which we did was with Moss Effect, and we had both Paro and Sneha joining in, where both of them used same transfer and they kind of created, fairyland kind of an effect. So as you would have seen, both of them were very different projects and both of them used different supplies, but at the same time they used transfers and all those supplies and created a project, right? So today we are doing something similar. So we have Parvati and Sneha who will be joining us today. So what they are planning to do is, as you know, we spoke up in our last live, you guys wanted to see black gesso versus white gesso. So similar to how we did in last live where we used black gesso and white gesso with a fairyland transfer theme. Today we'll be using black gesso and white gesso with rust and patina. So for those of you who are new to crafting, this is how the patina paste looks, right? It creates this patina effect. So this is patina on white and this is a rust effect. So this I think is a rust effect that I did on black. Okay. So these are the two texture pastes that they are going to use. I actually wanted to, do this craft tour with black and white gesso since long time, but I was waiting for this supplies to be back in stock so that you have enough ideas on how you can use this supplies in different ways. So let me just see both. Okay, so I can see Sneha and Paro both have joined in. So I'll just add them in the chat and we can take it from there. Hi everyone. Hello. Hello. Hello, hello. I am hoping people are joining in I and can't dropping hear off. So you, we are Khyati. just I can hear Sneha. okay. Can you I hear can me now? also Am I audible now? I can't hear Khyati. अच्छा पता नहीं वो तो मेरे को तो आवाज आ रही है ना मेरी ओके ऑल थ्री ऑफ अस आर ऑडिबल सो प्रॉबेबली settings में अभी जाओ भी एक नहीं बार। आ रही अभी भी नहीं आ रही मैं एक बार रीजॉइन करती हूँ. हाँ आप मेरे को सुन पा रहे हो हाँ, मैं उसको भी ओके सुन। अच्छा Hello. हाय Now I can hear you. Okay, okay, perfect. Okay. Hi, Kavita. Okay, so while people are joining in, if you guys want to take ahead, मैंने बता दिया बेसिक कि हम लोग आज रस्ट और पटीना करने वाले हैं. So अगर आप लोग एक एक करके दिखा दे कि आपका क्या आइडिया है, क्या प्लान है और हाय हेलो कर ले, तो we can take it forward. Yes. Yeah, Sneha, you start. Okay, okay. So my plan is to alter a box. ये काफी टाइम से मेरे पास पड़ा है. I have no idea कब से पड़ा है. So I want to alter. अभी आ गया इसका टाइम. Right. तो थोड़ा सा मैंने इसमें क्रैकल पेस्ट कर दिया है. Just हाँ, that cracks आ जाए. yeah, और बहुत सुंदर क्रैक्स है. मे बी बैक हाँ, कैमरा से अच्छा हाँ, दिखेगा. right. एंड मैं पूरा कवर करने वाली हूँ बॉक्स. Hmm, ऑफ कोर्स विथ एम्बेलिशमेंट्स और पटीना पेस्ट तो है ही अपना. right. यस, आई हैव ऑलरेडी प्रेप्ड सम ऑफ द एम्बेलिशमेंट्स विथ ब्लैक और Okay. सो आई एम यूजिंग ब्लैक जस्ट फॉर हाँ, टुडे. so I was about to say that today आज हम rust and patina we are going to use. So Sneha is going to do black gesso and Parvati is going to do white gesso. So आज हमने flip किया है.
so that Yes. you can see that जिसका strength probably नहीं है वो भी कर सकता है. It's nothing Correct. like that you cannot do it. Yes. It's just that of course थोड़ा learning लगता है, and सबको लगता है, हमें भी लगता है, आपको भी लगेगा, उनको भी लगा है. So Yeah. yeah, back to you guys. So I'm going to use black gesso. So I've prepped some and kept some aside. जो Right. लगाएंगे ऊपर एक एक लगाते जाएंगे. Then I'll use it use like black gesso later so that सब वो भी देख सके कि Right. black gesso के साथ वो कैसे use करना है. So yeah. How about you, Parvati? So, Sneha has already told that she'll be using black gesso. So, I'll be doing white gesso, which is I can work with white gesso with shabby chic kind of project, वैसे वाले. Right. But I've never done a white gesso with a patina or a rust paste. So this is the first time I'll be doing that. So it's interesting, it's new. Let's see how it goes. Because I always feel कि black के साथ वो rust वाला look जो आता है ना वो एकदम मस्त आता है. तो And I आदत पड़ जाती है. exactly feel opposite. कि white के साथ अच्छा मुझे मेरा सारा जितने भी रस्ट और पटीना है सारे एवरी डैम प्रोजेक्ट इज ब्लैक बेस इन दोनों में. बाकी आई हैव डन लॉट्स ऑफ वाइट जेसो प्रोजेक्ट्स बट नॉट विद दी दिस Right. combo, you know. correct, So correct. it's quite different, it's quite exciting and I'm anxious कि Yes. कैसे कहा जाएगा. But let's see. I've also done some crackle effect on my base. So I'll be using a Okay. normal MDF. I'll just flip my camera and I'll show you. Okay. Can you Yeah. see? Yes. Nice. I think I need to mirror. Now you can see properly, है ना? या उल्टा Uh, दिख रहा है? उल्टा हो गया Using अभी. हाँ, Okay. अभी using Now बराबर. it's okay. right hand or left hand? उससे Yeah, पता now it's okay. Now it's okay, I guess. Now Yeah. I can read. हाँ. Yeah, yeah. Now we can. Yeah. So this is the base I'm going to use. It's just a MDF base, 12 by 12, a bit big in size because my Right. embellishments they are a bit big in size. So I'm planning Hmm. to use these. So this will be my focal element. I've not prepped any of Okay. them. I thought I'll Okay. just do it in the live itself. Okay. And but I wanted some texture using our Hmm. crackle paste. So मैंने already I'll do applied. one thing. I will off my own video so that you guys get enough space so that people can see, and then you लोग can also have judgment कि तुमको कैसे लगाना Okay. So you can see the beautiful cracks. I had applied है. this Yeah. couple of hours back, and mine I didn't stencil. Like Sneha had stencil that using CraftAngle stencil. मेरा Hmm. random application है because my project will be mostly around here, so you can Okay. see that I've left a place here. I don't want Right. the place to go waste, Hmm. and rest of the place is random application of crackle paste so that I have good texture to play with. Yeah. Yeah. So I guess people can see two different applications of our texture paste also in mixed media. One directly applied with spatula and other through stencil. Right. So I guess we can get started. Yeah. Yeah. Just place my phone. Sneha, can you just tilt the camera with 90 degree because आपका vertical दिख रहा है rather हाँ. than horizontal. Okay. Okay. Yeah. I'll do that. uh Yeah, you are visible completely. The circle is visible. okay, great. पर हाँ, ठीक है. perfect. हाँ, थोड़ा लेफ्ट में. हाँ, अभी अभी आप पहले सेट कर लो, फिर डब्बा थोड़ा लेफ्ट में मूव करना So I'll directly start building my composition first, है. Okay. and
Then I'll gesso them all in one go, Okay. because it's white gesso, right? So I can Hmm. play around, मतलब उसमें से Right. वो एकदम अलग दिखने वाला वो डर नहीं है. And we Right. are anyways going to work with rust, so I'll have the liberty of, brown in the background also. So Yeah. I'm just starting off like this itself with the composition. Okay. So I have black gessoed it, so I'll also like start placing. एक बार थोड़ा सा Hmm. I let Idea ले लो. see idea ले लेते हैं so that Okay. So I So I Yeah. do know, but just to, sorry to interrupt, but Sneha, if you could, just give us a basic of what molds you are using, because I know that would yeah. be a question. Okay, so there's a like lot of mix of models. Yeah, me too. I think one is the gears wala is Prima. So yeah, so this I will be using this bull as my focal, which is Okay. this one. Okay. Then moth. Hmm. So moth भी आएंगे, and then Hmm. these are those frames. Yeah. This one, this one. Right. So this all you can I think buy from the website, right? Yeah. So Yeah, these are all three of yours are Prima molds, and all three of these all are of them. available. I'm not sure on the bull one, but Huh. the rest, the gears and all these are already Yeah. available on our website So for those of yeah. you who are interested. So I have chosen this as a focal point. You can choose Mm. anything, like whatever you Right. have. So yeah, Right. and these are the gears. These are my Hmm. favorite. सारे मेरे मिक्स मीडिया प्रोजेक्ट इसी के साथ होते हाँ. हैं. नहीं, gears and frames I feel are very versatile. So if you're a Yeah, newbie and if you want to start investing in molds, I think correct. frames और gears है और wings है. I think ये तीन चीज है जो आप बहुत अलग तरीके से True, true. you can use it in multiple projects. So it becomes very versatile and like basics must have for people who are getting into molds. And Kavita has a question for both of you. If one of you can take it, what exactly is patina paste? See, patina is also kind of a rust only. Like, Hmm. there's a seabed mein, if there's any iron related stuff, right? Right. तो उसमें जो Correct. rust form होता है, that will be in the form of थोड़ा bluish green Correct. and Correct. copper kind of a rust. It's not the normal rust that we see on जो हमारे एयर वाले रस्ट में जो ब्राउन वाला रस्ट होता है वो नहीं होता. So Right. it is that's a basic difference between normal Hmm. rust and patina. So patina Right. is considered more kind of a luxury kind of a product also. Like वो Hmm. बिकता भी the actual the patina वाला thing हाँ, is पटीना इफेक्ट considered, भी हाँ, बिकता है. वो काफी पटीना antique. आई थिंक वो आपका जब कॉपर ऑक्सीडाइज होता है तो हम्म. यू गेट मोर पटीना इफेक्ट, एंड जब आपका Hmm. आयरन ऑक्साइड होता है तभी यू गेट You मोर get रस्ट इफेक्ट. Right. rustic So, effect. Yeah. but both are oxidized effect. So Correct. just, while they are working, just for people to see, this is the patina effect. I'll just start my Yeah. screen and you guys can see. तो इसमें bluish greenish tone होते हैं, and if you see the metallic that is there is this copper like color, because copper oxidize होके you get the patina effect, right? So in real life if you see, this is how patina will look, which you can see on the clip that is done, Hmm. right? So copper when oxidized ऐसे bluish green हो जाता है, that's patina. And this is sorry, I just have to tell. Okay, so this is rust effect. This normally happens on iron related products. So उसमें आपको ऐसा yellowish, reddish, you will find the effect. So this is rust. And what we talk about rust and patina is we are actually mimicking the effect of rust and patina Right. through the paste. Okay, so ours is not real metals which is getting oxidized or anything. So that is what we are trying to achieve, the similar effect, but with mixed media paste. So I hope it's very clear now. And yes, Nirja, today it's a switch. Neha is doing black and Paro is doing white. So both of them are Yeah. pretty.
anxious as well as excited. So yeah, fingers crossed. We Uh, hope you guys like it. yeah. One good example is if you have पूजा के बर्तन at your हाँ. home, दिया and all, Hmm. उसमें देखो green Hmm. आ जाता है. हाँ. So, so if you want to see that natural one, Right. पीतल के and उसके बर्तनों में you can see. Yeah. So I think the mold that Paro is using is वो pipe vintage pipe mold, right? वो भी Prima और Stamperia दोनों का है. I think this is which Yeah. one? This is Prima only. Prima. This is Okay. pipes and gears or something, I think. Yeah, I it's am not pipe something mold. Yeah. yeah, pipes वाला एक तो ये Hmm. वाला है and another one I'm using is this Pocket watches. yeah, pocket watches. So I have Yeah. two pieces from this. So pocket हाँ. watches, this and this are Yeah. from this. All the pipes are from the first mold that I showed you. Okay. Some gears are from this, gears and Hmm. nuts and bolts. So this is the big gear, the large gear from again from Prima. Right. I have some these chain kind of mold pieces from this. This again is from Prima. Yeah. This I may or may not use. I have couple of magnolia flowers from this also, but yeah, this is again from Prima. Right. This is the grungy frames again Hmm. from Prima, and a couple of gears and bowls again from this one. This is again from Right. Prima. Right. Perfect. So thank you for mentioning those. I mean, because normally we get a question, so I mean, I feel it's easier for people to see in the first go itself what products you are using. Right. So the reason why I said the basic stuff now Mm. itself is because I wanted to know the placement before I stick it, right? If I Right. stick this up first and then I start putting the pipes and then Mm. realize that there's no place, then I have nowhere to go. So Right. this is the basic structure that I have in mind. The Right. Got it. So one more question for you, which I already know an answer to, but I just Nija is asking that have you used Artcast to create the mold pieces, or have you guys used clay? no, No, this is clay only. mine is Right. also clay. Okay. So But both of in them have future, used I clay. want to use Artcast. I Huh. have actually, but I Okay. उसका रेशो So में I think I somehow नहीं, so हाँ I exactly I was going to come to that क्योंकि अभी हम लोग हम्म ने we did a live with Anamika also on अनामिका Artcast, या right? it was And a very lot of time informative people get हाँ this question. Uh, correct one of the thing with Artcast you have to realize is treat it like your flash resin that it will cure in 10 minutes, right? So 10 minutes में वो ठीक हो जाएगा. Also, don't use a wooden stick to mix a bigger batch. Use wo beater which Anamika used in our Instagram live. For those of you who have already seen, it's like that egg yolk beater that you get normally for baking. केक Use the बीटर same हाँ. beater. हाँ वो it mixes very quickly and आपका आटा stick नहीं होएगा. So you could definitely do it. I will show you guys a piece which I have done just so that you guys can also know that it's possible, but it cures very quickly. So you have to be very quick about it, and you have to mix it with a beater. Don't mix it with wooden stick. That is something that I have also learned over the period of time. So जितना जल्दी आप mix करोगे और उतना ही it will be thinner to work with your molds. And tap oh it tap has tap come to out remove very bubbles. nice Khyati Yeah, this is Tamperia mold and it is very sturdy also. Like Abhima, Yeah, if I this is put this very on nice. a box, it will not have an issue. So I have done like lot of them. So I have done I thin also ones have also. आर्ट कास्ट बट मैंने Mm, जानबूझ के अवॉइड किया है बिकॉज इट्स स्टिल द टेम्परेचर एंड ऑल इज स्टिल थोड़ा yeah, tricky. So I was yeah, not sure if it'll cure in time, yeah. you all know I am someone who prepares things on time पे. No, no, I understand. So So, मेरे साथ whisker वो is चक्कर what हो जाता I was talking about, right? Whisker.
whisking bowl वाला whisking material, Yeah, right, yeah. right, The right. Correct, cake. correct. Yeah. मैं हमेशा वो नाम में कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो मैं बीटर बोलती हूँ उसको। एक्चुअली एग बीटर ही बोलते हैं ना उसको कि नहीं? नहीं, एग हाँ, बीटर अलग होता है स्नेहा। अच्छा ओके, अलग होता है। हाँ, ये वो ओके। केक के बैटर वगैरह वो मिक्स करने वाला अच्छा, तो तो विस्किंग ही है वो, विस्किंग के लिए होता है। गॉट इट, ठीक है, माफ कर दो। हेंस राइट। प्रूव्ड कुकिंग में कितना एक्सपर्ट है हम Yeah, एक सारे। मिनट, दैट इज नॉट कुकिंग, दैट इज बेकिंग, सो हाँ हाँ, वो देखो, इतना तुम्हारा आपने कैसे एटलीस्ट। बोल दिया कि ऐसे एक्सपर्ट कौन है कौन नहीं, मतलब पोपट हो जाए, ऐसे नहीं चलता, हम कुकिंग करते हैं। नहीं, वो देखो ना, मैंने बोला कुकिंग और उसने करेक्ट कर दिया बेकिंग, तो हेंस प्रूव्ड हाँ, मेरे को बेकिंग का एबीसीडी नहीं आता। मेरे को भी एटलीस्ट नहीं इट वाज है। दैट। Like cooking also I can do like a little bit of it, देखो, but baking is तो I tried in COVID and those were disasters. So मेरी फैमिली में बोला मत करो, बर्तन खराब करते हो तुम, साफ हमें करने पड़ते हैं, मत किया करो। नहीं, देखो मेरे घर के लोग भूखे नहीं रह रहे। आई एम ओके कुक। हाँ, I can आई cook, एम but ऑल्सो I cannot bake. गुड, आई एम ऑल्सो गुड कुक, बट आई एम नॉट अ, मतलब मेरे को कुकिंग में इतना शौक नहीं है। कविता ने पहले बोला तो आई थिंक कविता वुड बी प्रोबेबली अ गुड कुक, प्लस शी हैज किड्स, तो किड्स वाले सब सीख ही लेते हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं होता है बेचारे लोगों के पास। भूख लगी तो खिलाना तो पड़ेगा ना। मैं बना तो लेती हूँ, बट मेरे को इतना शौक नहीं है। लोग खा नहीं नहीं पाते। नहीं, अच्छा बनाते हैं, मेरे हाथ से खाना अच्छा बनता भी है, बट ऐसे बोलो आई मत। एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ यू इट। डोंट डू डेली, आई ऑल्सो नहीं नहीं, डोंट डू आई डू, डेली। आई डू। अच्छा, नाश्ता तो मैं ही अच्छा, बनाती हूँ, अच्छा। तो No, I don't. I mean, I feel that if I cook daily, मेरा वो joy चला जाता है out of cooking. So I like to do it like not that frequently. अच्छा। और मैं तो रोज ही बनाती हूँ, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। नहीं, माई हाँ, नाश्ता तो आई ओनली कुक डेली। अच्छा। नहीं, मुझे वही लगता है बहुतों के पास ऑप्शन नहीं, ऑप्शन होता तो शायद कोई रोज नहीं करता। मेन तो वही रहता है सब्जी कौन सी लेके आए। ट्रेजेडी। ओ गॉड, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है हाँ, घर का। आज आज क्या क्या बनेगा? बनेगा सीरियसली। so, for those of you who want to know about the products and all, what we have done is we did this last live also. So, we have created kind of like QR codes. So, what we'll do is we will show those QR codes on the screen. In case you are interested, take a screenshot of that part and just scan it on your mobile, and it will take you to the corresponding product links. So, I just want to show you some of the QR codes which we talked about right now. तो एक तो था कि they have already completed using gesso. So what Sneha is showing on the left is black gesso, and what Parvati will be painting right now will be white gesso. The QR code for the gesso is available on your screen right now. Okay, I just want to talk about a QR code for a minute. फिर मैं सिर्फ QR code हम लोग flash करते जाएंगे. आपको चाहिए तो take a screenshot and then use that QR code and go to the link. So this is just to make your guys' life simpler. So this is CrafTangles Gesso. On to you guys. या मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ, Right. लेफ्ट एंड राइट, बिकॉज माय स्नेहा थोड़ा डब्बा एवरी लेफ्ट एम्बेलिश में मूव करोगे क्या, हल्का सा? हाँ, परफेक्ट, अभी सेंटर हो गया। ठीक। हम्म, हाँ, सो एवरीथिंग इज गोइंग इन द मिडिल, सो हम्म, आई एम जस्ट बैलेंसिंग इट आउट राइट, लेफ्ट और राइट के इसमें। गॉट इट, एंड मेरे पास छोटे छोटे गियर्स भी हैं, तो आई विल ऑल्सो लाइक उससे भी बैलेंस होगा, राइट, इट विल लुक नाइस। या राइट। So again, we get this question a lot. Where can I buy these Prima and Stamperia mold that the artists are using? So that is why I have added the QR code for this category of molds. We have most of the Prima molds and Stamperia molds that the artists are using. So you can go there and check the link, and you can, decide based on your projects what you want. But in India, we have one of the biggest collections of Prima and Stamperia mold that you'll find. So do check that QR code out in case you guys are interested.
इंटरेस्टिंग. सो नीरजा इज सेइंग शी इज अ जुगाड़ू कुक. जो भी इजी वाले है ढूंढ ढूंढ के वही बनाती हूँ. ये मेरा मेरा सबसे कॉमन वही है. 10 minute रेसिपी सर्च ऑन यूट्यूब इज द मोस्ट कॉमन थिंग आई विल सर्च. आई लाइक कुकिंग. ऐसे कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ नया दिखता है तो आई लाइक कुकिंग दैट. मेरे को इंटरेस्ट आता है उसमें. मेरे को भी फिर if I'm sitting to cook like once a week then I'll make a elaborate meal like कोफ्ते की सब्जी ऐसा पूरा end to end करेक्ट बनाऊंगी. करेक्ट. चीज वाले या राइस ये वो. तो मेरी मम्मी भी बोलती है रोज को इतना खाएगा तो मोटा हो जाएगा. रिसेंटली मी एंड माय हस्बैंड हैव स्टार्टेड कुकिंग थाई. तो वो हमारे यहाँ हाँ. थाई करी भी बहुत Yeah, I've बनती है. also made it. I like it. हमको अच्छा I लगता I also है. like it. love हाँ Thai हमको curry. भी अच्छी लगती Yeah. है. या थाई हमारे घर में लेकिन मैं और मेरे डैडी खाते हैं. सो नॉर्मली आई मेक इट फॉर टू ऑफ अस बिकॉज वो हमारे घर में बाकी लोगों को कोकोनट ही अच्छा नहीं लगता है. सो हाँ ओके ओके. मुझे वो एक क्विजीन थोड़ा इंडियन टच आता है हाँ, उसमें. मेरे को तो हाँ. सो प्रॉपर वो मुझे अच्छा केरला लगता है. डिशेस की हाँ टेस्ट तुम्हें तो आती वही लगेगा ना हाँ बिकॉज वहां पे करेक्ट तो करेक्ट कोकोनट करेक्ट. ऑयली होता हाँ, है तो काफी वो घर राइट. का टेस्ट हो जाता होगा. नाइस. So Kavita is एंड saying she loves cooking and makes her family the guinea pig. Nice. Thank you, Manjusha. I mean, I have a very bad sense of humor, but I feel मेरा लाइव मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर निकाल के ले आता है. सिर्फ लाइव रिलेटेड ही है वो. रियल लाइफ में बहुत बुरा सेंस ऑफ ह्यूमर है. बट थैंक यू, आई अप्रिशिएट कि किसी ने तो मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर को नोटिस किया. एंड जुगाड़ तो यार वो तो सबका फेवरेट है फेवरेट टर्म. थैंक यू भाभी. माय भाभी हैज आल्सो कम एंड शी इज सेइंग Oh, लवली वर्क. hello. थैंक Thank you यू. for always joining. या. Yeah, she almost always she's there. या भाभी इज देयर. फिर पार्वती की भाभी भी होते हैं एंड स्नेहा के हाँ. पापा होते हैं. यस. आई रिमेम्बर. वो आते जाते रहते हैं. हाँ. So I'll move this here and this here. Yeah. सो इफ यू guys want to मतलब say कि ऐसे normally what are the common things that you do for the composition? I know this question and answer has been given in almost every life, but for those of the people who are joining for the first time, like आप क्या सोचते हो जब आप you know composition create करते हो? I think about the flow. Yeah, Yeah. me too. So what is like your favorite like direction of the flow that is like kind of a very basic hack that anybody who is new can follow? Yeah. So abhi aaj I am doing. See in the middle it's heavier Okay. and side में जब जा रहा है तो it's not that heavy. Hmm. So that's my flow. Okay. कि कम ज़्यादा and then कम. So Okay. it's Okay. like that. I can say कि हमें मिडिल में लेफ्ट या राइट ही करती हूँ मैं. Hmm. I think it depends on my mood. अच्छा. But yeah, I think लेफ्ट में भी ज़्यादा करती हूँ मैं. अच्छा. I prefer diagonally, like normally whenever I make. हाँ डायगनली भी अच्छे लगते ऊपर हैं. से नीचे राइट में ऊपर और लेफ्ट में नीचे मेरा हाथ वैसे बहुत कॉमन जाता है लाइक वेन एवर आई एम मेकिंग हाँ. प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द राइट हैंड लेफ्ट हैंड थिंग आई एम नॉट श्योर मेरा दिमाग वैसे वायर्ड है या. या पता नहीं बट या ओके. So Kavita has a curiosity or a query that how to use a mold with clay, art cast, and glue gun also. So do you have a reel or video? We don't, but that's a good This is feedback, the glue gun. Kavita. We Yeah. This is a glue gun one. Okay. And yeah, we can do some. Make a video in future. हाँ. Normally, क्या हो जाता है? It's such a basic step that mixed media में already there is so much to show in such little time that we kind of keep things ready.
But yeah, maybe in future we'll definitely, I was planning to do a video in future I'll just using show clay. quickly, Acha. Yeah, Kavita. Like this is a mold, right? And I have this glue gun with me. okay, I'm just quickly filling it up. Okay, with the small one of the smallest piece. right. I'll keep it aside for 5 minutes. By the Hmm. time this will be, completely dried, you can just pluck it out. I'll just Right. keep it aside. I'll show So you आपका in. जो owl है, that is also a glue gun mold, no? The owl that No, you no, are using in the center. this is resin. This was Acha, gifted by some crafter to me. acha. ये Because I स्टैम्पीरिया was going मोल्ड है to एक्चुअली. ask, ये Stamperia का mold है ना वो? हाँ, स्टैम्पीरिया का हाँ, है. मेरे पास ये वाला मोल्ड नहीं है. मैकेनिकल कलेक्शन का, हाँ. Right. So I don't have the mold. It was gifted by someone. You may Right. know Sonika. So she wanted some molds from me. हाँ, सोने So का. Right, right. so I had made a couple of molds for her, and Hmm. she made these in return for me. So ye. Lovely. Lovely barter. जो हम भी करने वाले हैं when we meet. हाँ. Yeah. No, but these molds, honestly, I understand why you may not have it because ये इतना focal point है ना, आप कितना बनाओगे? Like they are not like every time you won't use an owl in your project, right? Right. And it's like very prominent big owl. Big owl. So it will only be a focal point. It cannot be like a background piece. Background. Right. Correct. So, So, इसीलिए guys, if you are new and personally are looking to start off on where to invest molds, Prima में there are some couple of frame molds. There is a gear mold, like again a couple of gear molds. There are like the pocket watch mold which Paro has used, and the gear, the moth ones which Sneha has used. Gear one even Paro has also used. Flourish ones which she has used. All these are like basic molds that you can start off with. Initially, you don't need to buy like a specific mold if you are a very beginner to the molds. I had just wished, when I started, there were people out there who would have told me, okay, मेरे पास there are few molds which are very specific to the occasion. And Yeah, I after also. buying them, I realized, yeah. We all, I think almost all of us have वो specific वाले moles भी. But हाँ, sometimes it's good to have also. कभी कभी yeah. वो projects करते time अपने को अच्छा भी लगता है. Right. But But that initially nahi lena chahiye. So my हाँ, problem is right. I got a couple of them when I just started crafting. So at that time I did not have that kind of knowledge that what molds to invest into, etc. And now Right. since I do mixed media a lot, it doesn't matter. But when I started, if somebody would have told me, especially with Prima and Stamperia molds, because they are pretty expensive. So I mean, I would have Yeah. appreciated. So, in my experience, Yeah. background wale molds go for one background and one focal, Hmm. so that you will be sorted with that. Yeah. स्टार्ट विद और एम्बेलिशमेंट घर में और मिल जाते हैं लाइक चीज Hmm. क्लॉथ है हो गया लेसेस हो गए कुछ Right. दूसरी चीजें चीले बहुत हो मिल गई, जाएगी कीज हो गई. करेक्ट सो मेटल एम्बेलिशमेंट भी मिल जाएंगे इफ यू हैव छोटे चिप बोर्ड्स एंड ऑल सो आई ऑलवेज टेंड टू गो फॉर लाइक दिस Hmm. अभी रिसेंटली वी हैड टॉक्ड राइट Hmm. आई हैड वेरी लेस फोकल पॉइंट्स Yeah. सो इसलिए So नाउ आई स्नेहा का रियलाइज कि प्रॉब्लम उल्टा वी है. शुड हाँ मेरे पास बैकग्राउंड वाले हैं सारे Hmm. So yeah. Somehow, but I don't know. For me, now focal point, I like to sometimes use stickers and ephemeras also on my mixed media. So at that point of time, I for clay pieces, normally the way I use them as backgrounds rather than a focal. मतलब वो मेरा Hmm. स्टाइल है कि फिर मैं ऊपर एक मतलब कुछ और लगा देती हूँ फोटो लगा दिया चिपबोर्ड पीस लगा दिया डाई कट लगा दिया Correct, और correct. चिपका के हाँ. so that's how I like to do it but yeah if you are using like end-to-end molds then yes thanks dad
Yes, interesting barter, Kavita. Yeah, frame molds are definitely like must have. I think I have four frame molds with me. I am anyways obsessed with frame molds. Anytime Prima or Stamperia releases a new frame mold, I like to buy. I have a problem. Hmm. I have, even I Literally, I have. have four molds of frame, सिर्फ frames. Hmm. उसको मैं अभी कार्ड्स मेरे में भी पास यूज सिर्फ करती हूँ, like in mixed media cards, ATCs ओह and all that. I like अच्छा to use frames. ओके तो वो हैवी नहीं होता हो जाता है बट वो मैं हर बार नहीं हम्म बनाती हूँ ऐसे मतलब आई डोंट लाइक डू इट फॉर हम्म गिफ्टिंग एंड ऑल दैट सो हियर इज एन अनमोल्डिंग ओके ऑफ दैट glue gun mold Yeah. which Kavita, this Parvati is did. for you. अरे वाह मस्त बढ़िया. So छोटे छोटे moles के लिए instant, if you want you can go ahead and make हाँ, like this. But if you are again using glue gun to stick them, ensure that they are very thick, क्योंकि वो फिर melt होने लग जाते हैं मेल्ट हो if you are गया. हाँ sticking with glue gun. So you have to be extra cautious. This is an Right. instant method. Hmm. I do this many a times. Hmm. Right. Interesting. बट योर ग्लू गन इज वेरी नाइस लाइक हाँ. मेरी इतनी अच्छी नहीं है हमेशा दूसरों के अच्छे लगते हैं ना. हाँ, वो एक इश्यू है हम सब में। हम्म. नो नो मतलब नॉट दैट कंपेयरिंग बट या जेन लाइक जेन्युइनली आई एम हाँ, सेइंग मेरा वाला अच्छा हाँ. तो है है, वैसा मतलब वो मेरा तो बेसिक वाली है हाँ, जो अमेजोन पे मिलती है हाँ, मेरे पास भी I have basic because I don't use like glue gun as how हाँ she uses. मेरा ग्लू गन करेक्ट इनफैक्ट करेक्ट मेरा आई ग्लू गन निकलता डोंट ही नहीं है सालों से निकला भी नहीं होगा. सेम मेरा भी आई डोंट टेंड टू गो टुवर्ड्स ग्लू गन या पता नहीं क्यों मेरा या. तो जबकि इट्स ऑलमोस्ट वेरी एवरी एक्चुअली प्रोजेक्ट आई इजी नीड ग्लू गन। या. दिस इज माय गो टू। हाँ, you use it for आई नीड sticking, no? I use my gel medium only. Today also I made a project. I use gel medium only. मुझे भी जेल मीडियम ही चाहिए Yeah. कुछ हैवी और एंड स्पेशली विथ मोल्ड्स तो मुझे बहुत एंजाइटी होती है अगर हाँ, यूज नहीं उखड़ किया तो जाएंगे. मेरे को डर रहता है. पूरा हाँ प्रोजेक्ट बनने के हाँ बाद हाँ उखड़ जाएंगे. करेक्ट करेक्ट Now I'm going in with my white gesso. So my Okay. composition is done, at least for now. I think it is Hmm. done. So Okay. I'll go ahead and add my white gesso. Hmm. सो आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग ब्लैक जेसो Right. और So you can now, I think people are visibly seeing the difference. Right में white और left में black चल रहा है. यस I really like that chipboard piece also. It's very nice, Parvati, the one that you have used. This one? Clock, Yeah. हाँ, it's Thank very you. nice. Don't ask me where it is from because I don't know. I am inspired to do something just by looking at it. मतलब मेरे को आधी इंस्पिरेशन तो मुझे लगता नहीं, है ये लाइव्स में ही मिल बहुत जाती है. मस्त भी है because this is quite thick chipboard. ये वो पतला वाला हाँ, नहीं है if you see. right, So it's right. almost like an MDF gear piece. Oh, interesting. It's very nice. ये मेरे पास पता नहीं कितने सालों से पड़ा है and I didn't have Hmm. a cover to it. So I'm sorry I can't. I don't No even worries, remember no. the मेरे को brand तो here. इंस्पिरेशन आ गया. I mean, I'm looking at it and I'm thinking like a good stencil or a good die cut piece. Dies भी बन सकती है, mixed media. या Chipboard भी या Stamp बना will also सकते हो। look एक्चुअली good. We can use हाँ, chipboard chipboard भी बना also. सकते हैं. हाँ, Like we have the mandalas, right? We right. you can plan something हाँ, around. We don't yeah. have gears में as such. Abhi Hmm. we need
chipboards, we need Sneha list nikalo. हाँ स्नेहा लिस्ट मतलब मुंह पे होगी आई एम श्योर मेरे को व्हाट्सएप में बड़ा सा लिस्ट आ जाएगा तुम दोनों का ये अगला रेडी होना चाहिए people don't know the madness that goes behind the release no if they would have known they would say कि यार तुम लोग सच्ची में पागल हो so there is a हम good 24 घंटे comment for इसी you के all बारे में बात करते हैं। from Nirja. So she's saying since the time Crafters Companion, people used to do all kind of craft shows on TV. I was always wanting to see such shows in India too, and today watching this live feels like that to me. Thank you, Oh Nirja. wow, We Thank appreciate. you. Big compliment. Yes, thank you. yes, Thank you so thank you. much for your constant support. Yeah, she's there Yeah, always. Kavita is also there. Kavita, yeah. Kavita Kavita का भी तो आज Kavita, birthday yeah, है I was Nirja. about to yeah, say Kavita Yeah. Kavita. always. मतलब without Also, fail guys, like we it. have let 100. people know that there is a live, but if you have any friend who would be interested in such kind of live, you can always forward them and ask them to join in. I'm not sure if you do know, but if you do know, please share the word. I can see the madness in lives, तो background तो पूछना ही नहीं चाहिए. Yeah, don't even ask. Yeah. बेचारी हम ख्याति 24 घंटे भी I know. she can't even say और our many a times हम इतने ऐसे वाइल्ड आइडियाज लाके एकदम से सुबह सुबह उठते ही मैसेज कर देते हैं कि ख्याति रीथिंक हाँ नहीं but I feel वो मजा है ना that is kind of what keeps the excitement alive I feel वरना फिर you know it is very difficult to get an inspiration personally even as an artist or as a brand you know owner क्योंकि after a point you are like अभी हम क्या करें which I have spoken about it also with you guys a lot of time I feel बट आई थिंक यू आर डूइंग अ फैब जॉब स्पेशली जो भी अभी इन लाइन है पीपल डोंट नो अबाउट हाँ द मैं न्यू बोलने ही वाली थी वो फील लाइन रिलीज के लिए तो I also हाँ feel that we are doing fab मतलब jobs उसमें तो द न्यू रिलीज गाइस whomsoever is here in the live so yeah. Khyati is gearing up for some new products and lives हाँ Amazing मतलब stuff. एकदम out of the world kind of designs है so yeah looking forward Yes. yeah मतलब मैं अभी कुछ बोल नहीं सकती ना सो मैं हाँ अपना हाँ बोलना इसीलिए नहीं चाहती बट मैं यस गाइस यू इफ यू आर craft lover you should definitely save the yes, date yes. whenever we are doing a new release I mean normally I feel every live release we outdo our previous release but this time I don't know next release कितना इसको outdo कर जाएगा इतना amazing launch we are planning so yeah yes बहुत this is amazing है. beyond amazing मतलब And literally I know people are gonna go yeah crazy. nuts yeah literally yeah so yes So guys, मैं थोड़ा सा चीट करने वाली हूँ. मैं व्हाइट जैसे यूज कर रही हूँ. सॉरी पार्वती. तुम बेटा मेरे को मैंने अरे मैंने तो बस सारे बस बोल एकदम पे. वाइट वॉश जैसे कर दिया अरे बस बोल पे और कहीं नहीं. हम्म फोकल पॉइंट पे करने वाला है टू मेक इट पॉप Yeah. एब्सोल्युटली कविता मतलब हम लोग मंझे हुए आर्टिस्ट तो पता नहीं लेकिन पागल आर्टिस्ट तो जरूर है लाइक वी ईट ब्रीथ मंजे एंड की स्लीप कैटेगरी में नहीं या आती. वी ईट ब्रीथ एंड स्लीप आवर आर्ट फॉर्म समटाइम्स या. इसको कॉम्प्लीमेंट समझू या बेइज्जती हाँ हाँ मैं एग्जैक्टली आई वाज लाइक व्हाट. ख्याति ने हमें क्यों लिया है. नहीं नहीं like sometimes no sometimes I really appreciate like मेरे को भी गौरव sometimes he tells me like you know Khyati you need to like switch off sometimes
Like even when we are going out, I'm like, यार ये कैसे बाहर जाती हो? I see some design. I'm like, यार ये मस्त stamp लगेगी, ये मस्त stencil लगेगी. He's like, Khyati, you need to switch off when you are out. You need to learn that. या And I'm पर like, I don't have that. होता है मेरा मेरा भी होता है. आई गो फॉर योगा देन योगा में लास्ट में Yeah. मेडिटेशन कराती है वो. हाँ, शी yeah, आस्क्ड कि क्या सोच रहे थे. yes. मैंने बोला कलर्स. हे भगवान, हाँ, आई एम नॉट दिस मैड. तो मेरा थोड़ा मुझे बेटर है. बहुत नहीं नहीं, मेरे I बहुत am, I am. दिमाग में घूमते हैं. मेरे को भी गौरव वही बोलते हैं, मेरे को हम्म, इसलिए वो बोलता भी है that you need to meditate, like you don't have a switch off. And that is true, I या don't have a switch off. Like I will go on सेम. like thinking about it day in, day out. ऐसा तो मेरे को एंड अगर मेरे सोचना इस साथ आर्ट का पैसा मिलता तो मैं बिलियनर होती. ट्रू एक्चुअली मेरे साथ भी होता है ऐसा. हाँ, और मैं तो सोते सोते भी आई एम लाइक या थिंकिंग अबाउट समथिंग कि ऐसा बनाना चाहिए था तो वैसा अभी बनाना कोशिश करके चाहिए. इसलिए मेरे हाथ से फोन ले लिया जाता है सोने के टाइम कि तुम है ना रात को सपने में भी प्रोजेक्ट बनाते हो, तुम रख दो. तुम आई एम पागल प्रिटी हो. श्योर मुझे याद नहीं रहता नहीं तो मैं करती होंगी Yeah, वैसा. yeah. आई एम प्रिटी श्योर. I have felt it. Like when normally I plan courses, like during COVID, I did those master classes. So मेरे को नींद में I used to हाँ make projects like and वो रियली. तब होता है. मेरे से 12th में I used to do maths का sum in नींद. In my engineering, I used to do drawing के projects. So वो मेरा वाओ. वो बचपन से वो है कि there is no switch off. हम्म. वैसा. I mean, it's not a good thing, but yeah, here I am talking about it as as if it's a good thing and I'm proud about बहुत it. बढ़िया बात है. Yeah. Thank you, Neerja. I will definitely plan an art journal. Like मेरे को करना है. I am actually waiting for a new launch. उसको use करके I am planning like an art journal, but I'll definitely plan. It is, I mean, मेरे को खुद को करना है live. It's been ages. आई थिंक मुझे बैकग्राउंड में थोड़ा और टेक्सचर चाहिए, सो आई एम Okay, यूजिंग दिस स्टेंसिल. दिस इज परफेक्ट जेंटलमैन. I'll use perfect. these circuit Circuit. Yeah. yeah design. Hi, Suprita. हेलो. अच्छा कॉम्प्लीमेंट ही है. थैंक यू गाइस. अगर ये मेरे वाले कमेंट पे कॉम्प्लीमेंट था तो नहीं हो तो भी मैं ले लूंगी कविता एज अ कॉम्प्लीमेंट. कोई तो मुझे अप्रिशिएट करे मेरे पागलपन पे. नहीं, उसी पागलपंती का रिजल्ट है योर ब्रांड, द करेक्ट. प्रोडक्ट्स. या अगर ट्रू. वो ट्रू. नहीं एग्जैक्टली. होता तो वो पैशन इज इम्पोर्टेंट. इफ यू या नीड टू वो कॉन्स्टेंटली. एक्चुअली पैशन हिंदी में पागलपन ही होता है बाय द वे. हाँ, तो वो तो वो तुम यू कैन यूज दैट वर्ड. या मतलब till the time it is your income you can have that craziness is what Paro is saying. नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो. हाँ, मेरे को लगता है कि इफ इट इज योर इनकम एंड इफ यू हम्म, डोंट हैव दैट पागलपन, देन इट्स एन हाँ, इश्यू. then it's an क्योंकि issue. आप एक पॉइंट के बाद यू वोंट हैव थिंग्स टू ऑफर. वो Yeah, पागलपंती है, वो पैशन है, तो यू विल ऑलवेज कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव टू डू yeah, बेटर द नेक्स्ट टाइम. सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. yeah. पर वो हाँ, चाहिए. इट्स वेरी तभी आप. इंपॉर्टेंट. फिर स्टार्टअप में तो चाहिए. If you are a startup who is doing like a lot of things, I think so it you should be need that. there with every entrepreneur or any artist for that matter. वो Yeah. थोड़ा तो पागलपंती नहीं है जब तक. Hmm. I don't think it will go Yeah. on for a long Then I period. feel then you should do a job. मतलब personally अगर मुझे पूछो तो like job में you are getting paid even like you paid like अगर तुमने डिग्री की है you get paid well. Then if you Right, don't have craziness do job ना मतलब मस्त fixed income भी आ रहा है कोई टेंशन नहीं है. right. Of course there are people who love their jobs also. I was one of them. But over a period of time I feel वो burnout आ ही जाता है. But yeah. मेरे लिए तो आ गया था like by the end of 5, 6, 7 years I was burnout. There are people who have been working for 40 years and like I used to tell them यार hats off, you know, amazing. मेरे को नहीं पता मेरे में इतना. I mean, if I can do something as a job for 40 years and still be excited about it every morning. या
मेरे अपने Yeah, पेरेंट्स ने parents किए, actually. फादर ने I don't know how Yeah. they did it मेरे seriously. But I feel मेरे that's a फादर ने lot of, किए। upbringing. कि उनको बचपन से मतलब even me and my brother, we were very much wired that way कि यार तुम जॉब करो, जॉब में स्टेबिलिटी है, होता है ना एक वो बहुत लोगों का हम्म। जैसे अपब्रिंगिंग होता है कि यार बिजनेस ही करना है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत लोग की करेक्ट हाई होती है. करेक्ट। सो दैट वेज वी वर वेरी मच brought up के you have to do a job and all that. So initially we were also very happy, but like I feel we as kids, we have been brought up to question things. अभी Gen Z तो और भी अलग है. But even through our generation, if we see, there were things that we could question. Like I doubt हमारे parents had that liberty कि वो लोग question कर सकते थे. या नहीं, एंड चीजें ही कम थी, यही Hmm. करना है, इससे Hmm. ज्यादा और कुछ नहीं था। हाँ, option. लाइक देयर वाज नो करियर इन आर्ट और समथिंग, आई Right. डोंट नो। Right. I remember I wanted to डॉक्टर, do इंजीनियर। जीन का पढ़ाई, जीनोलॉजी का. मुझे बड़ा पसंद था बायोलॉजी में जीन्स. ओह वाओ, हाँ, या फिर मुझे सही। क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बनना था. और मेरे फैमिली ने रिजेक्ट वाओ, करके फेंक दिया दिस कि इज सो पागल हो, मतलब वियर्ड। लड़की हो कि तुमको क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ना है. मतलब तुम क्लाइंट कहाँ से लाओगे, जेल जाके क्रिमिनल्स को तुम मतलब इंटरव्यू करने वाले हो. मेरे को बोलते थे आर यू गोइंग टू इंटरव्यू समबडी लाइक वो एंथनी हॉपकिंस का कौन सा मूवी था, वेर ही वाज अ सीरियल किलर, आई फॉरगॉट. उसमें वो साइकोलॉजिस्ट जाती है ना, बोलते क्या तुम वो बनोगी और फिर कोई अटैक कर देगा तो. आई वाज लाइक छोड़ो, फिर बोलते ऐसे सिविल की चीजें सोचो, ऐसे मजाक मजाक में मत सोचा करो लाइफ में. आई रिमेम्बर आई हैड गुड मार्क्स. इट वाज नॉट दैट आई डिड नॉट हैव गुड मार्क्स, बट इट वाज नेवर एन ऑप्शन. मेरा तो इट स्पेस वाज लाइक रिसर्चर एयर बनना हॉस्टेस था। बनने जैसा. मेरे मम्मी पापा ने बोल दिया एयर हॉस्टेस भी नहीं बनना, कुछ ऐसा सब नहीं करना है, गपचुप इंजीनियर बनो या फिर सीए बनो, देयर आर ओनली, या डॉक्टर बनो, तीन ऑप्शन थे. So I have some ऐसा. more texture on my background now, and I'm happy ओके. with it. Rest of Yeah, it, the I'll circuit is looking nice. yeah. Rest of it, I think I'll add some stamping once everything is Okay. done. If I feel Okay. कि मतलब थोड़ा और कुछ missing है, I'll Got it. just dip my stencil and come back. हाँ, ठीक है. This planner that I'm using in my latest reels, Nirja, is that doodle वाली लड़की कौन थी? Alicia Souza. It is her planner that I'm using. But honestly, I mean, I have not selected this as a part क्योंकि वो Alicia Souza के doodles थे. But I like the quality. Baki, honestly, you can go with any brand which has, the plain pages into it. Don't just go for Alicia Souza because I know she's very expensive. If you like it, then only go for it. Just to show you, this is the planner. This is the planner. So it's Alicia Souza. This is how it looks. But I have seen some cheaper ones also. If this is very expensive, I think this is 2 grand plus 2000 plus hai shayad ye. So select like whatever makes sense for your budget. But this is what I'm using. I will quickly mute myself and heat dry this. Okay. Okay. So I have heat dried this, Yeah. and it's white, Yes. and I want to use burnt sienna for Got this. it. Thank you, Suprita. You made my day with the comment. So those of you who have joined in late, just wanted to tell you guys that during the live, we are just popping up the QR codes. So in case you are trying to look for any products that are being used in the live, you can just, correspondingly select the QR code and use it. This we are doing because even after, showing the products a lot of time during the live, a lot of people still had question कि उसको क्या search करें, how to find it on website, etc., etc. So that is why we are giving you these QR codes for most of the products that are being used. You can simply click on that QR code, I mean, scan it, and you are able to find it on our website.
हाँ, So I've just painted this with burnt sienna. right. So this is liquid acrylics, right? Correct. Yeah. 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 Hmm. Absolutely, Neerja. So मेरे को तो मतलब I was not that. I mean, I knew that मैं CA I would be a very bad CA even if I crack it. एंड डॉक्टर तो मेरे को खून से ही डर लगता है तो मैं क्या ही डॉक्टर बनूंगी द ओनली ऑप्शन वुड बी अ डेंटिस्ट बट स्टिल आई एम श्योर दैट वुड आल्सो बी स्कैरी फॉर मी सो आई मीन माय फेट वाज डिसाइडेड दैट डे कि इंजीनियरिंग ही करना है थैंक यू शालू आई So गॉट दिस फ्रॉम सरोजिनी आई लव सरोजिनी शॉपिंग I want to. आई कुड नॉट हियर यू स्नेहा यू So सेड यू वांट टू गो टू सरोजिनी yeah. आ जाना मैं जाऊँ तभी आना वी विल प्लान मेरे को भी बुला लेना, Okay. मेरा पति लेके नहीं जाते। हाँ मैं तो तुम्हें बोलती हूँ मैं बंजारा भी जाऊंगी तभी भी तुम आ जाना मेरे साथ हाँ, मैं हम लोग मेरे को ले चलेंगे जाना। इस बार मैं जाने वाली हूँ बंजारा भी मेरे को बट भी मैं ले जब जाना। आती हूँ तभी तुम आउट ऑफ टाउन रहते हो हाँ, ये भी है प्रॉब्लम। So I used patina paste, ओके द मेटालिक copper वन नो वाला. पटीना में से विच इज लाइक Yes. कॉपर करेक्ट. तो हॉर्न्स पे मैंने वो यूज किया और मुझे ये डिस्ट्रेस लुक बहुत अच्छा लग रहा है. हाँ एक्चुअली वो तो मैंने डिस्ट्रेस अभी रब जूम कर इन दिया. करके अच्छा लग रहा है दूर पहले ऐसा लग रहा था कि आपने क्यों निकाला मेरे को लगा आप वापस पेंट करने वाले हो बट अभी सही लग रहा है वो उसकी डिटेल्स नहीं दिख रही थी ना गोल हेड की नहीं दिख रही है. हाँ हाँ हाँ. वो अभी दिखी once you zoomed in तो thank you Suprita ये our मेरा lives फोकल are I पॉइंट mean है. honestly speaking our lives are very boring but yeah I don't know. I would not call it exciting, definitely. But yeah, we all are like, I'm sure all of us are shopaholic in our own ways. ओके, ये नाउ दोनों तो आई फुल एंड शॉपaholic है, मुझे पता है. मेरा शॉपaholic बंजारा में ही और सरोजनी में ही निकल जाता है when I come once a year. so I think Sneha is doing mostly patina. I will Okay, be या. mixing both rust effect and patina. So I'll have a cool. background of rust mostly, and Okay, patina का थोड़ा ऊपर ऊपर से highlights and all those things will have patina, more of patina effect. So it'll be cool. a mix basically. Okay, okay. Parvati, just before you start, can you move the circle a little bit on the right? Your right. हाँ, और थोड़ा और एकदम सेंटर कॉर्नर्स थोड़ा जा रहा है नहीं अभी हल्का सा लेफ्ट हाँ परफेक्ट 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 थोड़ा राइट वापस वो हो गया Okay. So guys, I'm थोड़ा और starting राइट with कर लो metallic. हाँ Sorry. बराबर हाँ प्लीज स्नेहा गो है So I'm starting with metallic patina paste ओके first, ओके and then I'll go for blue and mint. ओके I'm just परफेक्ट opening my rust base. So for those of you वो. who are interested in knowing, both our rust paste and patina paste have four colors in them. Each of them are 60 ml jars. In patina, you will find metallic, which is copperish metal shade. Then you will find dark blue, which gives the dark blue patina effect. I'll just, share my project side by side to show you the colors while they are coloring so that you guys will understand what I'm talking about. Okay. So I'm hoping, हाँ, तो this is the metallic जो copper यहाँ पे use हुआ है. यहाँ पे जो आप कॉर्नर में देख रहे हो this is the dark blue. Then if you see, this is the light blue part. Yeah, this part is light blue. So this is the light blue patina, and then you have a mint green shade. Sorry, yeah, this is the mint green shade. So these are the four shades of patina that you will find, which combined and layered, you will create this kind of patina look. So this is light blue. In the corners, I have done dark blue.
blue, this is copper or metallic, and then you have mint that I have used. Okay, and for I'm what? starting off with my Yeah. rust. Sorry to Okay. cut you off, but Yeah. No. this is the brown one. Brown. So this is the Yeah. darkest one. I'll be Yeah. using all four shades. So I'm Hmm. starting off with the darkest shade, and then I'll Okay. build up with the lighter tones. People Got do it. it ulta also. It depends on Yeah. what kind of How you end are doing result, it. yeah, Yeah. you want. Yeah. So So this is the brown, yeah, which is the this is rust brown. Then you have the reddish color that I've had at the top. Then you have, sorry, then you have orange and yellow. So if you see, there are certain bright points where I have used yellows, and then where you see this kind of color, rusty color, that is a combination of red and orange that I have mixed. So kind of, when I was layering, the color got mixed and it created this rust effect. So these are the four colors that you can use to create the rust effect. So just for you guys to see, this is what they'll be using today. now one pro tip for people Mhm. when you're using these rust paste and patina effect paste, these are quite coarse. They are not just Hmm. normal paste. So Yeah, even these four shades, right? They have different consistencies, hmm, different composition of right, their own. So right. try using a old brush. Don't use a new brush for this because Yeah. Yeah, your brush will go completely off once you yeah, start applying this, because this is correct. So quite here coarse you and can there. see the coarseness that Parvati is talking about. Here I've zoomed in one of the Correct. process. Yeah. So this is the kind of coarseness. Again, or as she said, each and every paste has a different coarseness. So in rust, I think brown has the most coarseness, and in patina, I think the dark blue has the most Yeah, coarseness. right, And then metallic is very smooth in patina, and in this yellow Very is very smooth. Yeah. smooth right. in the rust. Okay, I'll close my video so you guys can see their video. Nirja, I mean, I wish, so this is something which we, Parvati and Sneha, we were discussing. So Parvati and Sneha, Nirja is saying you should organize an offline live where all CrafTangles fan can come and meet you also. Yeah, we Oh. actually did discuss about this thing, Yeah, honestly, and maybe we'll, plan out something on this. right. The problem is we all three of us stay in three different, Different cities. Yeah. cities. वो भी एकदम अलग अलग कोने में. That is Hmm. one problem. But whenever we are traveling to the same point, maybe we can Right, plan out something. right. So, Suprita, the mold, the owl mold is a Stamperia mold. This I think is a part of the mechanical collection. वो जो vagabond आया था उसका part है I think, right? वो Uh, एंटोनियो नहीं, वाला. ये एंटोनियो का ही है, बट आई डोंट थिंक दिस इज वागाबॉन्ड वाला कलेक्शन. दिस अच्छा, वाज I don't remember the name, sorry. I'll let you know okay, after the live. But this is not yeah. Vagabond wala. This is Stamperia का mold definitely और एंटोनियो का ही collection है. हाँ The हाँ, ये problem, guys, एंटोनियो. with Stamperia mold is after a period of time they do go stock out and they are not stocked in again by the brand. So once it is stocked out, it is stocked out. And I think the owl one is stocked out. It is no longer available. I think it's a 2, 3 year old Purana हाँ, this is design. an old mold. Yeah. So I think I say this time and time again कि if you are liking a mold, guys, I know it may sound like कि मैं बेच रही हूँ, but that's not the case. If you are liking a mold, वो maximum times what happens is those molds do go out of stock, and many a times they don't get back in stock because after a period of time they do not replenish those designs again. And guys, again, while working with these paste, अभी ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है. Right. this Yeah. this takes time. इसका Yeah. एक Yeah. एक लेयर बनता जाएगा. Final finishing में Build ही होगा. you'll see, yeah, Yeah. what is happening. At the end, it will come Yes. together. So Yeah. Yeah. currently, if So, you feel it's all muddy, it's what
the hell is happening kind of feeling aa rahe honge if you're seeing this for the first time. I know because I myself, when I'm looking at through the video, I'm like, kya hai ye? Though I've worked on it. So But just it's a a heads part up. of the process. Yes, it's Yes. just a heads up कि ये ऐसा नहीं होगा. And like I think I will also ask this to Paro, but the where you're putting just from a perspective of a beginner, right? Mm-hmm. Paro, where you're putting the brown color is where you want the like it's the deepest part of the like the composition, right? जहाँ पे Correct, correct, सबसे deep होगा वो. तो correct. जो सबसे डार्क दिखेगा that will be the deepest part and then as she goes up it will be the lighter part. So that is how you create that 3D effect जो हम सेम वाटर कलर में भी करते हैं, right? जो shadows होते हैं वो dark होते हैं and when we blend it out to the lighter parts those colors are light. Right. So that's the reason Yeah. why, if you see, I am concentrating around, my composition, and जो भी main Hmm. elements है, उसके around मेरा dark brown आ रहा है, Hmm. and I am watering it down Right. in between so that I have some color to the Hmm. rest of my this thing too, but the darkest shade stays near the edges. Right. वो थोड़ा शैडो इफेक्ट टाइप मिलेगा आपको. Right. सो Now, दिस विल Sneha is also ऐड. doing a similar thing, but since she is doing a Yeah. black gesso, she has put in a coat of like a metallic, I think, in a lot of areas, क्योंकि उसके ऊपर blue और खिल Yes. के आएगा as compared to black part. Am I like correct in the assumption, Sneha? Correct. Is Correct. that what is the Yes. logic? Correct. And this copper looks much, much like beautiful with black gesso. Right, So मेरे को black background में copper चाहिए था. right. And just So it. FYI to all the people, Sneha has actually learned this technique directly from Finnaber herself. मतलब offline Oh yeah. workshop कर रही हुई है. I am Offline. so jealous. I can't Yeah, yeah, even me tell too. you how jealous I am. But yeah, she has done it. So Yeah, yeah, I have done. And she's very, very, very sweet. बहुत like she come across like very friendly कि यार मिले तो हैं अपन पहले. हाँ. आई गेस वो so सारी टीचर्स का ट्रेट होता है ना, मतलब ऐसा मुझे लगता है लाइक आई वोंट कम And ऑफ एज फ्रेंडली, आई actually डोंट थिंक सो. she told वो कुछ आर्ट करती नहीं थी. She was a teacher actually in अच्छा. school. अच्छा. हाँ पर उसका ये स्किल बहुत अच्छा था. हाँ. She used to teach it very well. या या सो इफ यू सी हर ओल्ड वीडियोस लाइक वेयर शी यूज्ड टू यूज चिप Hmm. एंड ऑल दैट, उसमें भी वो बोलती नहीं है बट द वे शी डज स्टेप बाय स्टेप अगर आप म्यूट भी सुनो Correct, तो भी correct. आपको समझ में आ Yes. जाता है कि व्हाट इज समझ में आता. शी Correct, ट्राइंग टू correct. पोर्ट्रे. yeah, her lives, her, हाँ. all those things are very detailed. या So, वेरी एक नाइस. मुझे लगता है Guys, कि I'm कई बार drying it's this. only Finaware who can explain to that राइट. level of, details. And I feel she's a very honest. Like I have seen her using Timol's ka paper dolls in her life, and being very sweet about it. कि मैं Timol's के paper dolls, I feel they go very well with the project, and she has used it. But Yeah, that yeah. ways I like her. ऐसा वो उसको वो नहीं है कि मैं सिर्फ Prima ही use करूँ. So I think I'm happy with my browns for now. If I need, I'll add अच्छा. more brown later. But अभी के Right. लिए I am closing my brown. Now, another thing, these pastes may dry out, so always ensure that हाँ. you have Foil. this foil intact. इसको Right. निकाल के फेंकना नहीं. Keep the foils intact. Close it off once you're done tightly. Right. And this goes for all the acrylics like gessos, pastes, everything, not just the rust and putty. Right. Next, I'm going in with the red color. Yeah. So now I won't be using a lot of it. Now it'll be Yeah. mostly जो भी colors अभी मैं use करूँगी, the rest three, right? Red, orange and Hmm. yellow. All three of them will be mostly like
highlights kind. Right. So I'll start using my patina, Right. oh, the blue and this mint one. Okay. So this So, blue is the dark blue one that you are using or the light blue and one? no, this is the lighter one. Okay. This one is dark, so but I want to use this. Light one. Okay. Yeah. Oh, Now, another thing, while using rust paste, so I Mm. like to mix my browns, yellow, reds, and orange. Yeah. And when coming to my yellow, I try to, completely dry off all other layers Right. and then go in with yellow because yellow is quite prominent and I want Yeah. that yellow to pop out well. I don't want it to I mix. also use the same technique. Yeah. Yeah, so that's something that I do. Mm. so yeah, guys. In this case also, acrylic we have whatever we have used. Mm. Yeah, this is now permanent. Okay. Agar if you want any change, you will have to do gesso again. Yeah. But I think I'm okay here. Okay. And if I feel like मुझे लगता नहीं है कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी, but Hmm. if at all I feel like changing it, Right. black gesso will help me. Okay. So मैं mostly rustic है तो मैं nooks and crannies में जाना चाहूँगी. हाँ, इट इज ऑलरेडी लुकिंग अमेजिंग ना, वो ब्लू कॉपर पे बहुत सही पॉप कर रहा है, इनका ब्लैक बहुत रेड सही Yeah, और लग रहा that ब्राउन looks सही. amazing. ऑलरेडी दो दो कलर में दोनों एकदम अमेजिंग लग रहा है, यू कैन सी द इंस्टेंट डिफरेंस, सेकंड कलर ऐड होते है. ही. Yeah. एंड इमेजिन ये So चार कलर ऐड होके एकदम ही परफेक्ट हो जाएगा. so naturally भी यही होता है, right? So राइट. that the कॉपर पे वो, metal जो है वो हाँ, आपका रिएक्ट होने लगता है, तो आपका बेस कॉपर होता है, फिर वो correct. ब्लू ग्रीन होने लगता है. Exactly. So this is also permanent, guys. If it dries, या. it dries. या. So make sure you're very mindful of it. या. So while you guys are painting, thank you, Kavita. She's saying it's looking like Jadoo. Suprata is saying, see, everybody is now jealous of you, Sneha. तुम जाके करके आए हो तो, not just me and Parvati. और थोड़ा सा और जला दूं, थोड़ा सा और. तो इसीलिए मैंने वो बॉम्ब यहाँ पे डाला. See, It is Oh wow, मैंने ये it ये is प्रोजेक्ट था. required. ये It सीखा is था. required also that people know कि मतलब हाँ हाँ. uh, you have मास्टर के it is पास it सीख is के not आया है, हाँ मतलब टैलेंट, मतलब सीख के आया है, सीख डाली है हमने इतने सालों हाँ में. मतलब it is not everyone who can you know do या. it. None of Yeah, us and could. या. these guys come to India very rarely, या. like है ना, हाँ बहुत कम. उसमें भी I think they come to Delhi एक ही mostly, बार आया है, बाकी वो तो दिल्ली इधर. आए थे, वही आया है. हाँ. हाँ. So I don't know. एंटोनियो बॉम्बे आया था. इंडिया आना का. हम्म. हाँ हाँ, he came to. फिर उसके बाद कोरोना and all या. started, right? तो No, but I don't know. I honestly, matlab, I could be wrong, and I'm sure I would be wrong. But as you said, कुछ कुछ चीजें physically आपको मजा भी आता है. But मुझे ना हमेशा से I like more online workshops than offline workshop. I have always been that kind of a person. मेरे को ना हाँ अपनी नहीं स्पीड पर पे करना पसंद है. मेरे को अगर आप प्रेशर डाल दोगे कि ये 2 दिन में वही 2 दिन करना है, तो मुझे मतलब मजा नहीं आता है, क्योंकि हम्म. मेरे को ऐसा होता है ना कि मेरा मूड होना चाहिए वो दिन. अगर इफ माई मूड इज बैड, नो, आई लिटरली इवन इफ आई डू फॉर 10 hours, आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट. वो ऐसा मैं somehow I was उसका very moody person. उसका एक कारण बताती हूँ हम्म. क्यों आप जाओगे. You spend lot of money on it, so Yeah. you have to go. कि भैया इतना पैसा डाला है, हम्म. अब तो जाना ही पड़ेगा. नहीं हम्म. I think नहीं, she does मतलब ये retreat जो also ना, मास्टर ऑनलाइन But this रिट्रीट हाँ भी is करती है a ना. this is totally a different yeah I experience, Yeah, think yeah, यार. I sure. I would any day prefer
मतलब if हाँ, it is एक बार तो Guinevere करना or चाहिए। Antonio, who is in front of me, हम्म। I think I would any day prefer a offline class than an online class with वो आप these सवाल people. भी पूछ सकते हो. इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस Right. इवन लाइव में भी, लाइक हाउ वी आर टॉकिंग राइट नाउ करेक्ट आल्सो, करेक्ट। राइट? यू कैन आस्क कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है जब तुम ये अप्लाई कर रहे हो, क्या यहाँ चल, पे ही क्यों अप्लाई कर रहे हो, एंड ऑल दैट. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बट समहाउ है ना, मेरे को वो भी लगता है कि मेरे को है ना बहुत ये है कि आई मीन, एक तो मेरे को इतना क्राउड देख के थोड़ा स्टार्टिंग में ओवरवेलमिंग ही हो जाता है. आई एम श्योर मैं स्नेहा जितनी सोशल इंसान नहीं हूँ. तो नहीं, मेरे को तो क्राउड वो से भी मुझे मतलब भी हेल्प प्रॉब्लम है, टाइप. but हाँ. I think I'll still go if they are here. I would go. राइट. राइट. या ख्याति, अगर कोई हो ना तो स्किप हाँ. योर दैट हाँ. पार्ट कि मैं नहीं कर सकती, पर चले जाना। हाँ, नहीं वैसे दो लोग हो ना, अगर जाएंगे तो हम तीनों साथ में ही जाएंगे. हम लोग इतनी बकर करेंगे कि फिर नम्र आके बोलेगी लास्ट बेंचर को डांटती है, ऐसे कर क्या रहे हो तुम लोग, सीखने आए हो कि बकर मारने आए हो? ट्रू ट्रू। साथ में ही जाएंगे. और मेरे सो को ऐसा गाइस, अकेला आई फाइंड इट वेरी वियर्ड. सॉरी, प्लीज गो अहेड. सो आई एम मोस्टली डैब कर रही हूँ मैं, एंड मेरे राइट. को वो ब्रश स्ट्रोक्स नहीं चाहिए। हाँ. सो राइट. I am, और on the other hand, doing brush strokes because I want brush strokes here. ओके. हाँ. So, हम्म, and I have already done brown, red, and orange. Now I राइट. feel that मेरे को थोड़ा और brown चाहिए, so I'm going हम्म. in again with some browns. हाँ. और ये ना रस्ट में बहुत कॉमन होता है कि जब आप रेड और ब्राउन्स को मिक्स करते हैं तो बहुत बार ओरिजिनल ब्राउन मिक्स हो जाता है, तो देन यू गो बैक एंड डू ब्राउन. ये मेरे साथ भी बहुत होता है इन रस्ट. Yeah, and it is a good way to build your rust the way you want या. it. या. एंड स्नेहा, इट हैज कम आउट रियली ब्यूटीफुल. दो कलर में भी मुझे मजा आ रहा है टू बी ऑनेस्ट. थैंक यू। यस, पर मिंट विल आल्सो या लाइक वो हेल्प। मिंट तो मिंट आते ही ये इट्स वन एकदम ऑफ माय अलग लेवल पे फेवरेट. चला या जाएगा। मिंट आते ही अलग हो अलग ही जाता है लुक ना। आएगा. राइट. Yeah, राइट. yeah. हाँ। Mint तो elevates project to somewhere else. मेरा या. favorite is mint only. मेरा भी फेवरेट इज मिंट हम्म, एंड लाइट ब्लू. वो दोनों मिक्स होके दे मेक वेरी गुड लाइक मुझे कॉम्बोज. भी, मुझे इन जनरल ब्लू ज़्यादा पसंद है, हाँ. तो आई टेंड टू गो फॉर ब्लू। बट यस, दिस मिक्स ऑफ दिस कलर मिंट हाँ. एंड ब्लू इज लाइक राइट. समथिंग मेरा एल्स। भी इसीलिए मतलब, और मेरे को somehow है ना, पटीना आई लाइक ऑन व्हाइट एंड रस्ट आई लाइक ऑन ब्लैक. सो आई एम वेरी लाइक क्यूरियस टू सी, आज हम उल्टा कर रहे हैं, पटीना ऑन ब्लैक एंड उल्टा कर रस्ट रहे ऑन हैं, व्हाइट. So it is very और interesting बहुत for ऐसे me to see. ऑर्गेनिकली हो गया है हाँ. हमारा वैसा हाँ, ऑर्गेनिकली कि हो गया. आई एम सोच श्योर कि तुमने हाँ, कि ब्लैक सोचा नहीं सिलेक्ट था हुआ और फिर वैसा। तुमने बोला कि मैं पटीना करूंगी, और उन्होंने व्हाइट आया और उनका आया कि मैं रस्ट करूंगी. कि नॉर्मली हम मैं बहुत प्रोजेक्ट करेक्ट। देखती हूँ तो वो उल्टा ही होता है. लाइक ब्लैक गोज रियली वेल विथ यस। रस्ट and Rust. white goes really well with patina. So this is also interesting to see for people, who already do like rust and patina. It's going to be a different experience. It is a And different अभी experience एकदम for आ रहा है. myself. Yeah. मैं अभी बोलने आई थी पारू का भी, देखो अभी लेयरिंग दिख रहा है, मतलब वो सब कलर्स मिक्स हो रहा है तो. यस, ट्रू। So now Neerja has a question for you all. Any recommendations for K-dramas to binge this weekend? Mm, के ड्रामा। वो अच्छा latest. था ना जो पार्वती, यूट्यूब। मैंने तुम्हें बोला था, वो क्या था, माय हैप्पी मैरिज ना, नहीं माय परफेक्ट रिवेंज क्या था? हाँ, नहीं, marry my husband. मैरी माय मैरी माय हस्बैंड. दैट हस्बैंड। वो इज नाइस. मेरा भी वो चल रहा है. वो वाला my husband saw that in my watch list on हाँ. Prime. बोलते हैं वो कि बोलता है, क्या ये तुम करना क्या चाह रही है, बोलना क्या चाह तुम रही है तू? तुम तुम ऐसी चीजें क्यों देखती हो, फिर फालतू अपना दिमाग चलाती हो। नहीं, उसको बोलने का, लेकिन उसका पति जो करता है वो तुम नहीं करोगे. करोगे तो अपन शादी तक पहुंचेंगे ही नहीं. मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ. हाँ, so that तो he knows. Yeah, so I I mean, but I liked it how she, became like a boss girl and फिर वो revenge लेती है. मेरा भी yeah. अभी तो 2 एपिसोड ही हुआ है, but that's a good ये marry my husband. और आई एम श्योर स्नेहा तो देख मुझे रही है देखना है कुछ अभी। इंटरेस्टिंग और. मैं
देखती रहती हूँ, मेरा चलता रहता है। तो आपका रिकमेंडेशन कौन सा है? अब ये सब करेंटली तो एक चाइनीज वाला चल रहा कौन सा वाला? है, एमिड स्नो हाँ स्टॉर्म हाँ, मिड लव स्नोस्टॉर्म समथिंग लाइक वाला, दैट। ओके ओके ओके। हाँ हाँ, तो वो चल रहा है। हाँ। तो आज हमने एक जर्मन चालू किया है, अच्छा ये यतिन वांटेड टू सी। अच्छा। तो वो एक देख रहे ओके हैं। लेट्स सी वो कैसा निकलता है। ओके। लाइक लिटरली वी हैव जस्ट स्टार्टेड। वो अच्छा रहेगा तो So नेक्स्ट there लाइव is में आई विल टेल यू। a like Navjot Khosla is saying Dr. Cha is also very good for those of you who want to try a Korean show. अच्छा, हाँ वो ओके। डॉक्टर है ना, मतलब she goes like in her 40s she starts practicing her doctor's license, like she is a mother of I think one or two children, ऐसे बड़े teenagers वैसा। हम्म। तो वैसा ओके। है। मेरा पर्सनल मतलब नया तो ऑनेस्टली मेरा एक्चुअली इफ यू गाइस आर इनटू लाइक शर्लॉकी टाइप्स shows, so I'm watching one new one which is called Death in Details. It's an American show. हम्म। वो मतलब ओके। मर्डर ऑन रिवर नाइल, अगर आप तुम लोगों को पता हो, प्रियंका चोपड़ा का एक आया था शो मूवी, वैसा स्टाइल का है, मतलब इट इज वेरी अगाथा क्रिस्टी टाइप। सो इफ यू गाइस लाइक ओके। थ्रिलर्स देन दैट इज लाइक दैट्स गोइंग रियली गुड, लाइक डेथ इन डिटेल्स। फिर मेरे को एक ये पर्सी जैक्सन का भी शो आया था, लाइक इट्स लाइक फैंटेसी बच्चों वाला, दैट्स ऑल्सो रियली नाइस। हम्म। आजकल वापस मेरा यूएस शोज चल रहे हैं। चल। यस। तो दैट्स ऑल्सो रियली नाइस। बाकी इंडिया में तो शार्क टैंक चल ही रहा होगा आई एम श्योर सबका, एक्सेप्ट स्नेहा ऑफ कोर्स। हाँ, मैं नहीं देखती हूँ वो, पता नहीं क्यों, कल मैंने गौरव से को बोला इंटरेस्ट नहीं स्नेहा जागा मुझे। शार्क टैंक इंडिया नहीं दिखती, मुझे क्या बात कर रही है, मैं बोला हाँ। थोड़ा शॉकिंग है, नो। People are getting shocked. या I to Okay. watch no, that. because it has like become very much synonym to mainstream media after especially the first season. Yeah. मेरे को लगता है उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतने लोग देख लेंगे। इतना अच्छी व्यूअरशिप है उसको, मतलब काफी लोग देखते हैं। हाँ Kavita, then you should watch Percy Jackson. It's really nice. And another favorite of mine on kids is Legends of Hanuman. जरूर देखना, मतलब अमेजिंग एनिमेशन, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा। मैंने सबको बोला है, पार्वती को बोला है, स्नेहा को बोला है, मेरी भाभी को बोला है, सबको बोला है या जिसके यू घर में टोल्ड। बच्चे हैं डेफिनेटली देखो, यू विल एंजॉय लेजेंड्स ऑफ हनुमान। इट कम्स ऑन हॉटस्टार। वेरी नाइस शो, वेरी नाइस, मतलब मैंने हर सीजन दो दो बार देखी होगी, इतनी पसंद है मेरे को। गाइस, आई एम ट्राइंग दिस, तो यस मैं म्यूट कर रही एंड हूँ, ओके। स्नेहा इट इज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल, मैं बोलना चाह रही थी जब आपने जूम किया, बट मैं बोल नहीं पाई। थैंक यू। Yeah, it looks थैंक amazing, यू। Sneha. अमेजिंग लग रहा है, थैंक मतलब यू। मुझे लगा नहीं था ब्लैक इतना अमेजिंग हो जाएगा, बट अमेजिंग लग रहा है। सिनाबेर के क्लासेस काम आ रहे हैं। हमें ज्ञान मिल रहा है। And for those of you who are new to K dramas, my favorite is Hometown Cha Cha Cha. Don't miss that out. Very nice show. Hometown Cha Cha Cha. My favorite हाँ, is Guardian. Guardian is also nice. Very nice. I like the chemistry between the two I leads. I love it. also like that one also. For North Korea, South Korea wala. हाँ, Crash Landing on You. Crash landing on it. That's also really nice. Three, like those are my favorites till date. Uh, so guys, I want some Hmm. more depth. So there's white peeping through, which I don't want. Right. So Yeah. I am going in with some spray paints. So I'm using Hmm. Lindy Hmm. क्योंकि अंदर तक जाने के लिए brushes and all are not, Spray. Yeah. Yeah. yeah, working. So I am going ahead and adding some spray paints. So I don't have those white patches. Right. So you're using a shade of brown, right? No, this is kind of Yellow. yellow and gold kind of a shade. Okay.
and then I'll add some browns also on top. Hmm. So this is just to reach, the corners and Yeah. the depths, because I am Right. not liking white. हम्म I'm नहीं not हाँ, a bit. बराबर है वो. नहीं ऐसे इसको ब्राउन ज्यादा अच्छा लगेगा, ब्राउन और येलो. Rust में I tend to cover almost everything with rust. I don't leave a lot of white or black for that matter. पूरा ही मैं rust कर देती हूँ. So yeah, सो animated, I गाइस मैं have थोड़ा watched सा Enchanted, Coco, even Luca is a good movie for those of you who are interested. लड़का mermaid लड़के का, it's very nice. And Elemental मेरा बाकी है देखने. सो गाइस मैं थोड़ा सा अलग चेंज थोड़ा सा कर रही हूँ. Okay. नॉट लाइक बहुत कुछ अलग नया, ये यूज होता रहता है. सो आई एम गोइंग टू यूज गिल्डिंग फ्लेक्स विथ पटीना एंड आई एम वेरी क्यूरियस कि वो ब्लू और ग्रीन के साथ अच्छा लगेगा. एंड आई थिंक क्राफ्ट एंगल्स के हैं बहुत सारे कलर्स मेरे पास. ये मिक्स वाला है. Hmm. दिस इज वेरी बेसिक वन जो अमेजोन पे मिलता है, Hmm. बट क्राफ्ट एंगल्स के बहुत सारे ऑप्शन हैं. Right. और एक सो मतलब सॉरी टू से बट मेरे को एक बोलना था कि ये स्नेहा का जो है मतलब स्नेहा जस्ट अ फीडबैक कि कॉर्नर्स में अगर आप कॉपर करोगे ना तो और भी उठ के आएगा. आई एम श्योर आपका अलग आइडिया है. हाँ मैं फिनिश करूंगी. आप कॉर्नर्स में कॉपर डालोगे तो फाड़ू हो जाएगा, बट करेक्ट आई एम श्योर करेक्ट आपका अलग करूंगी आइडिया हो तो करूंगी करना. ऐसे मेरे फीडबैक से मत मैं करना, बट जस्ट नहीं नहीं मैं ब्राउन था मेरे दिमाग में. अच्छा. सो बट वी कैन डू कॉपर ऑल्सो. हाँ मतलब एक बार देख लेना, वो दूर से मेरे को ऐसा लग रहा है कॉपर करोगे तो क्योंकि एकदम अच्छा उससे लगेगा. क्या ऐसा हाँ. हाँ फोकस हाँ. यहाँ आ जाएगा, बिकॉज अभी कैसा खाली खाली सा है. राइट. सो यस वो है मेरे दिमाग में. आई वाज थिंकिंग ऑफ डूइंग ब्राउन, बट यस कॉपर विल आल्सो लुक Yeah, I think copper will वेरी look नाइस. better than brown. Personally, my opinion. Again, करेक्ट मतलब you do करेक्ट you. करेक्ट करेक्ट. यस यस अब अपन करके देखते हैं ना, यही के ही हो जाएगा. Yeah, King the Land. King the Land. Somehow पता नहीं. I did not like King the Land. I know it's a very unpopular opinion, not liking King the Land, but मजा नहीं आया मेरे को. I mean, I have seen आई the show लाइक्ड इट. of that guy. Like he has better chemistry with other leads and other shows. जबकि लोगों को इनकी ओके. chemistry बहुत सही लगी ये show में, but I have liked his other shows. इवन आई लाइक द दैट द किंग. The Eternal Monarch, वो ली मिन हो वाला. करेक्ट करेक्ट. Yeah. लेमन हाँ हाँ हाँ. मुझे वो हिंदी में देखने में इतना मजा आया फनी ना, लगा, इतना हंस मजा रहे थे आया. कि नहीं पेट पकड़ पकड़ के. बहुत फनी था, बहुत फनी. I somehow don't like watching, मतलब दूसरे लैंग्वेज में, हाँ. uh, for any movies or anything for हाँ. that matter. या बट बट एक्चुअली यू टाइम से वो हो ये जाता है वाला क्योंकि ना तू. कॉन्स्टेंटली देखने में ना तुम दूसरा काम नहीं कर सकते. अभी जैसे तुम अभी मतलब अगर मैं मेरा बहुत बार होता है कि मैं कुछ लैपटॉप पे काम करते करते देख रही हूँ तो फिर मैं कॉन्स्टेंटली वरना वो कैप्शन पढ़ने पड़ते हैं, तो मैं भी प्रेफर करती हूँ कभी कभी कि मैं हिंदी में देख लूँ, बैकग्राउंड में चल रहा है. करेक्ट करेक्ट. तो वो स्पेशली मैंने हिंदी में देखा, बाकी अगर इंग्लिश हो तो आई वॉच ऐसा इंग्लिश में. पर वो इंग्लिश. हाँ. इतना फनी था, इतना फनी था कि मतलब ऐसे अपन जैसे अपन ऐसे बात करते हैं हाँ. ना कि तू कहाँ से आ गया यार, तेरे को समझ भी नहीं आता क्या, ऐसे बात हाँ. करते हैं वो उससे. नहीं वो लड़की सो थोड़ी इट वाज वैसे भी वेरी दिखाई है ना, फनी. पुलिस वाली होती है, ब्रैश होती है, और वो पुलिस किंग वाली होता है उसको एंड कोई तवज्जो ही नहीं वो देती. किंग है, उसको जेल में डाल देती हाँ. है. एंड ही इज सो लाइक किसी ने मेरे को टच नहीं किया है, हाँ. मैं कभी जमीन पे नहीं बैठा हूँ हाँ. एंड एवरीथिंग. And he looks the part also. He looks very royal, the hero. Was very, he करेक्ट looks करेक्ट good. ने उसकी पर्सनालिटी वैसी है Yeah, एक्चुअली, लंबा चौड़ा. I think he is one right. of those, heroes जिसमें वो feminine touch नहीं है in uh, हाँ. Korean industry. Even though बाकी he in, is Gora and Patla and all that. हाँ हाँ, he's not that करेक्ट करेक्ट. patla, he has good build. वो तो अभी हुआ है, उसकी स्टार्टिंग के देखो एकदम हाँ काकड़ी था वो वो. किंग में भी उस वो टाइम पतला ही है. नहीं ठीक अभी ठाक वो है किंग में तो. पैचिंग को से वो थोड़ा मोटा हो गया है, ऐसा लगता है Like मेरे को. the Vincenzo guy, I find him very हाँ, feminine. he is तो बढ़िया है.
he's short also, ना थोड़ा. I feel वो अपना Indian mentality में tall, dark, handsome is very much imbibed in our ये culture. I feel. मेरे को तो मतलब tall is a like I like tall guys. मतलब short होते ही वो कितने भी good looking हो, I mean I don't find them attractive. वैसा हो जाता है. तो वो I feel वो हम लोग का nature भी है as an Indian. आर माधवन किसको किसको पसंद नहीं पसंद है. आई I mean I लव like हिम, him as आई a good लव हिम। actor. मतलब पहले तो मुझे But बहुत ज्यादा पसंद था, अभी तो हाँ ही इज मुझे नॉट भी दैट आर माधवन दैट वी यूज्ड टू लव, बट स्टिल आई या लाइक हिम। जैसे उसका कौन सा था यार, रहना है तेरे दिल में, दैट वाज वही लाइक सबको वही पसंद है. हार्ट थ्रो। दैट एरा इवन उसका दूरदर्शन पे एक सीरियल आता था आई यूज्ड टू अच्छा. जस्ट बहुत ही Kavita is saying she छोटा सा enjoys ऐसा Telugu movies. Awesome. Telugu movies कौन देखता है? I mean, I have not seen. I mean, I must have seen. I don't know if it's a Telugu movie. ऐसा कभी कभी मैं देख लेती हूँ हिंदी डब मूवी साउथ इंडियन वाले. हम्म। बट मुझे यहाँ पता तो नहीं. क्रेजी है लोग क्रेजी अरे मुझे बोला ना. I mean, I have not seen Bahubali 1. So, and when Bahubali या 2 was going to release, so ऐसे डिस्कशन चल रहा था ऑफिस में and people were like, बाहुबली 2 आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. मैंने बोला 1 कब आई? ऐसे देवर सो तू पागल है, तेको पता नहीं है बाहुबली तूने देखी नहीं ये वो. लाइक यार नहीं देखी ओ है. या तो मतलब फिर मतलब बाहुबली 2 के मैंने पहले मैंने तो बाहुबली 1 देखी, फिर बताया मैंने देखी, अच्छी थी. अभी फिर मैंने 2 देखी. हाँ इट वाज अ नाइस. आई लाइक इट. या इट वाज वेरी नाइस एंड बहुत सोच समझ के बनाई हुई थी बाय द एंड ऑफ टू सेकेंड मूवी का लास्ट पार्ट तक उनके पैसे चले गए थे, वो दिख रहा था खत्म हो गए थे. वो जब उसका पुतला गिरता है रिवर में, दैट वाज सो बैड. आई मीन आई वाज लाइक गौरव क्या ये लोग ने किया है, मतलब इज दिस एनिमेशन. वो बहुत ही वो लोग ने या वाहियात. वो निकाल सकते थे, पता है, दे कुड हैव स्किप्ड इट रादर देन मेकिंग अ जोक आउट ऑफ दैट. बट यस So इट इज I am pretty fine with the rust look now. Now हाँ I इट्स am लुकिंग नाइस. going to add in my patina. So now the ओके. patina will come हाँ. into play. आई थिंक अभी स्नेहा का भी गिल्डिंग फ्लेक्स हो गया. या हम्म. मैं एक्स्ट्रास निकाल रही हूँ हाँ. सो दिस इज अ गुड दैट हैक, इधर ऐसे उधर ब्रश लेके करना. ज्यादा हाथ गंदे नहीं होते, वरना दे या टेंड मेरे टू को स्टिक ऑन योर बहुत फिंगर्स. मेरे को बहुत इजी लगता है इट्स वेरी कन्वीनियंट या दिस इज अ गुड हैक. मैंने भी कभी सोचा नहीं, बट हाँ ये ब्रश से बहुत सही हो जाएगा. लाइक हम्म आई लाइक दैट एक्टर. वो जो मैंने फारूक को भी बोला है शायद, वो वांटेड वाला हीरो. आई रियली लाइक हिम, इज वेरी गुड लुकिंग. महेश बाबू Mahesh हाँ. Babu. ही इज गुड लुकिंग. हम्म मैंने उसको रियल लाइफ में भी देखा है. यस I liked him after looking at him in real life. I said सब लोग देख रहे हैं. Actually he was in a flight to Hyderabad. मैं हैदराबाद आई थी तभी मैंने देखा. हाँ तो सब लोग बोल रहे देख रहे हैं. मैंने बोला कौन है? ऐसे लोग उसी को देख रहे. फिर मैंने बाद में बोला अरे ये तो वांटेड वाला है. वांटेड की जो साउथ इंडियन मूवी है, मेरे को पता नहीं था. देन आई करेक्ट रिसर्च कि वो हाँ वांटेड का हीरो कौन है. एंड देन लाइक आई लाइक हिम, इज अ वेरी गुड लुकिंग, ऐसे चौड़ा एकदम. ही इज वेरी टॉल, मतलब अच्छा दिखता है वो. यस गौरव या. सामने ही बैठे हैं, ख्याति अब। तो क्या हुआ? आई मीन आई लाइक हिम एज एन एक्टर. कौन सा होगा? मेरे को आने वाला है मेरे को वो, मैं उसको या पहचानता भी नहीं होगा. उसके अरे लिए तो मैं ठीक है एग्जिस्ट भी गौरव नहीं को करती. हीरोइन पसंद होगी यार नहीं लाइक आई नॉर्मली लाइक तेलुगु, मतलब इन साउथ इंडियन देयर वेरी ही इज वेरी लीन एंड टॉल. दैट आई लाइक ही इज अ गुड कॉम्बो. एंड मतलब मेरे को पहले लगा एक्टर ओके होगा, बट एक्टर नहीं, इज गुड. सी हिज डैशिंग कम भारत, ये मूवी का नाम है. डैशिंग सीएम भारत. ओके. माय गुडनेस, अमेजिंग नेम. विजय मूवी. विजय पता नहीं कौन है, बट आई मतलब मैं गूगल मार के विजय देखती हूँ. देवरकोंडा अच्छा वो विजय देवरकोंडा, वो जिसकी एक मूवी आई थी वो आन्या वो पांडे, कबीर सम सिंह वाली पांडे के साथ. हम्म। हाँ ओ कबीर सिंह वाला. हॉरिबल राइट मूवी राइट राइट, कबीर सिंह वाला, ओरिजिनल कबीर सिंह वाला. अर्जुन रेड्डी या. वही हो
अच्छा, दैट विजय, आई थॉट, बिकॉज आई नो साउथ में विजय है, दो तीन है ना कि एक ही है? No, no, uh, अरे देर आर there are मेनी. many. या, आई डोंट नो, आफ्टर वेब सीरीज आने के बाद मेरा मूवीज बहुत कम हो गया. आई डोंट वॉच मूवीज एनीमोर. मेरा भी मूवीज काफी कम हो गया. सो व्हेन आई वाज इन मूवीज एरा, तभी मैं इंग्लिश मूवीज देखती थी, तो मेरे पास यू हैव गॉट अ मेल, द हॉलिडे, वो सब मैंने देखी है. लाइक टॉम हैंक्स वाज माय फेवरेट. फिर वो व्हेन हैरी मेट सैली, वो सब मैंने बहुत देखी है. तो क्योंकि कॉलेज में थे, छोटे थे, तभी मूवीज देखते थे, और तभी मुझे इंग्लिश मूवीज, यू हैव गॉट अ मेल, वो सब बहुत अच्छी लगती थी. सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ दोज मूवीज. और फिर अपने अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी की तो मूवीज देखी है मैंने. इतनी मूवीज बनाते थे, आई वाज लाइक, और द सेम कॉम्बिनेशन. मेरे को तो कभी कभी लगता था ये मूवी मैंने पहले देखी है या नहीं. सेम हीरो, सेम दोनों तीनों हीरो, और सेम सिमिलर स्टोरी लाइन. Yes. विजय थालापति. ओके. ओके. Please stop. Tamil only. Mahi सब likes अभी his पारो इज अवर song. एक्सपर्ट इन ऑल दिस. हम But the gilding मतलब flakes is looking really nice, huh? Sorry to cut you, but वो gilding flakes का इफेक्ट सही है, वो सिल्वर गोल्ड भी अच्छा लग रहा तो वो है. वेरी मेरा नाइस. मिक्स मिक्स वाला था. हाँ, तो उसमें ये तीनों थे. एक्सपेरिमेंट अच्छा लग रहा है एक्चुअली. हाँ मतलब तो मेरे को भी मुझे पता नहीं था कैसा लगेगा, बट इट्स लुकिंग रियली प्रिटी. वो ब्लू के साथ आई वाज लाइक वेरी या. समहाउ, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि अच्छा लगेगा ब्लू के साथ. नहीं, नहीं, अच्छा मस्त लग रहा लग है. रहा है यार, बहुत मैं अभी बहुत पारो फाड़ू का लग भी रहा है. पटीना धीरे धीरे ऐड हो रहा है, तो अभी एकदम मस्त मिक्स होते जा रहा है. सो यस, अभी लेट्स गो फॉर, मुझे क्या करना था. Paro, since you do a lot of like mixes of rust and patina with black gesso as well as white gesso, right? My question to you is like, what do you prefer first? Like patina first and then rust, or rust first then patina? Rust first and then patina, because वो जो Okay. pop. Oh God. Paro का शायद कट गया. कट गया. हाँ मुझे लगा. She is online. I think कुछ तो हुआ है. Call आ गया होगा या maybe. ओ अच्छा, हाँ ओके ओके. Probably. I hope she does realize. और फिर आ हाँ. जाएंगे, तब तब तक हम आपका जूम इन कर देते हैं, so people can see. Okay, यस. she is here. We can hear you, Parvati, Hello, now. can Yeah, you you hear are me? audible. या Yeah, या yeah, या. you are audible. Hello. Yeah, yeah, you are audible. Hello? ओ शी कांट हियर अस, आई थिंक. She can't hear us. Um, can you guys hear उसको, me? we can hear you. Can you hear us? वी कैन. अच्छा, इसको बताएंगे कैसे? हाँ, बताए कैसे? Hello. I'll ping her, I'll ping her. उसको बोलना पड़ेगा कट करके वापस हाँ, आ जाए. I'll WhatsApp her. Yeah, yeah. सो मैं जितना भी गिल्डिंग हाँ. वाला एक्सेस है, आई एम जस्ट रिमूविंग इट. Hmm. Yeah. Parvati. एंड Okay. Yeah, इज she शी went हियर? somewhere. ओ ओके. I think she went. She just like, I told her to reconnect. करेक्ट करेक्ट या. सो Uh, Parvati, नाउ. are you able to hear us now? yeah, I can hear you both now. We can ओके, also hear गुड you. गुड. Actually, Please I go got a ahead. call from Mahi's. हाँ, वही हमें लगा है कि कॉल आया लगा होगा, तभी कॉल कट आया गया होगा. हाँ, तो I asked him to keep him for some more time. होगा. Okay. सो मैं ड्राई ब्रशिंग करूंगी विथ टेक्सचर पेस्ट गोल्ड. Gold. Okay. सो सो दैट हाइलाइट्स हो जाए, लाइक लाइक अ ट्रू फिनेबार
style. I'll put it on my hands. Oh, getting your hands dirty. Yeah. I'll zoom in थोड़ी देर से. Okay. It, it will show. So I'm going and adding the blue details to the edges so that वो Hmm. अच्छे से खिल के the highlights are Right. shown. हाँ, अभी व्हाइट आने के बाद काफी कलरफुल हो गया मेरे को एक्चुअली है ना माय प्रॉब्लम व्हेनेवर आई मिक्स रस्ट एंड पटीना पर्सनली आई हैव एक्चुअली wasted 2 3 projects when I did this because वो दिखता है ना इतना इजी नहीं है इवन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू राइट नाउ इट लुक्स रियली नाइस मेरा तो पूरा मिक्स हो गया था सो मेरा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि समटाइम्स आई ऐड टू लेस ब्लू और समटाइम्स आई ऐड टू येलो और समटाइम्स आई ऐड टू मच ब्लू सो Hmm. वो एक बैलेंस आउट नहीं होता है विच विथ रस्ट एंड पटीना पर्सनली No, I love the combo. मतलब rust Hmm. and patina for me, Hmm. मैं तो I personally love the combination. But like my question is like how do you go about it? Like rust हम समझे पहले brown डाला फिर red, orange, and then once everything is dry, you add pop of yellow, right? Yeah, and Then when once you the start with rust, patina, what yeah, is the once the rust is completely dry, so I heat dry hmm, it. ठीक है, hmm, once because I don't want the colors to mix after yeah, that point. So I don't want okay, the rust and patina to mix. So I ensure that my base is completely dried. The rust hmm, is completely dried up. And then with patina, I start with the darkest blue first, then the light okay, blue, then mint, and then my metallics. So okay, that's the order that I go about with. right, I use the metallics to highlight. right. I also do the same thing. Actually, मतलब what Sneha did was I think वो black में that makes sense कि पहले copper करो या metallic Copper करो और cut. फिर colors Correct. करो. White में I do उल्टा कि I go with dark blue, then light blue, then mint, Yes. and then metallics. बट वैसा. अगर रस्ट में यूज करूंगी तो मैं आई गो फॉर रस्ट पहले बिकॉज वो डेप्थ मुझे ज्यादा अच्छा देगा. Right. हम्म. मेरे को ट्राई करना है क्योंकि आई हैव ऑनेस्टली मतलब मेरे द प्रॉब्लम इज कि मेरा कॉन्फिडेंस चला गया इन मिक्सिंग द रस्ट एंड द पटीना बिकॉज आई हैव डन 2 प्रोजेक्ट्स और मैंने दोनों बिगाड़ दिए थे टू द पॉइंट कि मैंने फेंक दिया उनको कि यू नो इट ओह. इज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी. सो अगर डेप्थ देना है क्योंकि इट्स वाइट बेस राइट तो उसको या. उसमें डेप्थ देने के लिए आपको एक डार्क तो यूज करना ही पड़ेगा. Right. So What I now, like to do when I mean I imagine rust and patina is कि जहाँ पे भी मैं रस्ट करने वाली हूँ ना उसको मैं ब्लैक जेसो करती हूँ और जहाँ पे मैं पटीना करने वाली हूँ हाँ उसको मैं ओके. व्हाइट जेसो रखती हूँ वहाँ और बहुत फिर मैं मिक्स बहुत बार करती हूँ करते हैं वैसे. वैसा. करेक्ट करेक्ट. हाँ. दैट इज ऑल्सो गुड हैक मतलब कर सकते हो आप. हम्म. बट इफ आई यू थिंक वांट ये टू मैंने यूज कोई तो बोथ. प्रीमा के डिजाइनर क्या ही देखा था मतलब दिस इज नॉट हम्म. समथिंग फ्रॉम माय ब्रेन तो प्रीमा के आर्टिस्ट का ही देखा था where she had like she had done the base rust and then the layers she had done patina. So हम्म. that is how she did that. The layers में उसने white gesso किया, base she did black gesso, and then the rust she did in the black, and patina she did on white. now you'll This slowly gold is start also an seeing. interesting combination that Sneha is doing with patina. या सो highlights I like to do it with gold so that वो एक येलो वाला उसमें फील आता है. पार्वती was saying something. Yeah, No, I was just telling that I'm now adding थोड़ा highlights with all these ये जो mint वाला color है. So hmm, you will पहले सब कुछ flat था, but now you'll right, start seeing the layers. right. या वेरी प्रिटी. Hmm. अच्छा लग रहा है.
I like the flowers are looking really good. जो उसने कोने में डाला है ना. ये वाला ना. And the Hmm. frame, yeah, and the frame is also looking really nice. Guys, as always, if you have queries in terms of, how a particular combination of rust patina is done, etc., like how I ask so many questions right now, because whenever rust and patina is combined, I'm always curious. So please, feel free to ask those questions right now in live itself. It's looking really pretty. But I think अभी बहुत कर दोगे आप तो वो मिंटर वो चला जाएगा. मेरे को बोल रहे हो? हाँ. ओके नहीं नहीं मेरा हाँ हो गया थोड़ा है अभी वो ऑलमोस्ट। गोल्ड ओवर पावर कर रहा है ब्लू हाँ और हाँ मिंट नहीं को नहीं ऐसा मतलब फ्रॉम द टॉप मैं व्यू. वही देख रही थी कि कहीं ऐसा लग रहा है क्या कि मुझे करना चाहिए, सो आई मैं उठा के वही देख हाँ. रही थी। The gilding flakes का pop is really good. Like अभी मतलब that's a really interesting combination. या आई आई वो जो मैं सोच रही थी वो लाइक अच्छा निकल के आया है। Hmm. या सो लेट्स डू दिस, इसका बॉर्डर कर लेते हैं। I'm just curious to know, guys, are the cracks visible after adding so many layers of gessos and paste? मैं Yes, जस्ट वो ही कर रही थी, सी it is. हाँ. अच्छा क्योंकि मेरे देखती को हूँ है ना थोड़ी देर। इतना दूर है ना zoomed out तो दिखता नहीं है. अच्छा दिख रहा है ना करेक्ट है, मतलब दिख रहा है. ऐसे दिखेगा क्यूरियस थी दिखेगा। मैं. यस, ओके. सी अभी दिख रहा है। हाँ अभी दिख रहा है. सो है। राइट आई कैन सी दैट. है. Hmm. नाउ अभी पारो का एकदम वो मिंट और ब्लू आने के बाद एवरीथिंग हैज कम एकदम आउट टुगेदर हाँ, रियली वेल. करेक्ट। I love the pipes, so they are looking really good in her project. यस नाइस। And ये जो textures है ना, from the space, they हाँ. are adding वो एकदम मस्त वाला rustic looks into Yeah. that pipe. Well, this literally took us, like months that we were thinking कि texture डाले नहीं डाले डाले तो भी कौन सा डाले and all that. So it took us like quite a good amount of time when we were thinking on it कि हम क्या करें. हम्म। क्योंकि मॉस का These are अगर आप really देखोगे तो good. मॉसी टेक्सचर है ये सैंडी टेक्सचर है एवरी टेक्सचर इज थोड़ा डिफरेंट. No, these spaces are really good and एकदम से आपका project elevate कर एलिवेट हो देगा. गया, करेक्ट या। या. So I'm done with my rust patina. Now I'm going in with my copper. So now the ओके. magic यस। will happen. थैंक यू कविता. कविता सिंह सच में अंडर वाटर लग रहा है एक्चुअली मतलब वो वैसा ही लगता है. एंड नाउ दैट आई सी साइड बाय साइड दोनों सिमिलर लग रहा है क्योंकि वो रस्ट के बदले इन्होंने इनका कॉपर आ गया कॉर्नर्स में. सो इट इज लुकिंग सिमिलर नॉट द सेम ऑफ कोर्स बट या द कलर्स आर लुकिंग सिमिलर. क्योंकि उन्होंने That's गोल्ड डाला तो that's दैट हैज कम yeah. आउट एज येलो. That's the beauty of adding वो rust. पहले मैंने इसीलिए हम्म. किया क्योंकि that will give me that dark, राइट. base to work with. Otherwise, हम्म. वो
मैं थोड़ा सा ब्लैक का एक बॉर्डर ये करती हूँ. I'm just using a sponge with black gesso. Okay. I have this habit of, using my fingers to do highlights. Yeah. Uh, Yeah. so Yeah, I use it like waxes, ये metallic Right. वाला. So Right. I'm correct, going ahead correct. and adding it like that. Yeah, I also do it the same way. This is another good way क्योंकि वो our fingers only touch the top part. So Right. that Correct. always looks better. Brush से control नहीं रहता है. Hand will give you better control. And Sneha is adding black on the corners, right? Correct. Black And gesso. like उसको एक Okay, border मिल जाएगी. cool. Guys, मैं ये फटाफट करके maybe I will end my life. Yeah. No, no, we'll end after both of your projects are done. We'll end only. We are touching the 2 hours Yeah. mark. Almost we are done, Yeah, right? I think your finishing touch ही चल रहा है. Hmm. Am I audible now? Yes, you are. ओके Yeah. मेरे हेडफोन्स ने भी जवाब दे दिया बोला 2 घंटे हो गए लाइव बंद कर दो मेरे को एक्चुअली जाके माही को पिक करना होगा हाँ इसलिए. सो देयर इज अ क्वेश्चन इसमें स्प्लैटर्स भी अलाउड है बिल्कुल है, क्यों नहीं है? So अलाउड I'm मतलब बाकी नहीं adding, आपको डालना है तो डाल दो हाँ, I'm adding the metallics to my edges also. या तो वो थोड़ा complete वो look आ जाएगा. सो आर यू गाइस गोइंग टू मैं ऐड इसमें थोड़ा सा स्प्लैटर्स लाइक आई एम आल्सो क्यूरियस आई थिंक इट इज लुकिंग नाइस एज इज स्पेशली स्नेहा का तो गिल्डिंग फ्लेक्स है तो ज्यादा हो जाएगा मुझे लग रहा है स्प्लैटर्स हाँ, जरूरत नहीं है मेरे इसमें. So I added black gesso and then उसको निकाल दिया तो वो उसके नूक्स एंड क्रेविस में चला राइट गया. सो अभी हाईलाइट हो रहा है. पहले वो दिख नहीं राइट रहा था. हाँ सो नाउ एक्चुअली वो अभी उसका यू कैन सी. सर मुंह दिख रहा है हाँ, सो अब वो एक्चुअली दिखने लग राइट गया है. this is another good hack guys if you want to like show the detailing of the molds like how she is doing with the bull you can always go apply black gessos and immediately clean it black gesso white gesso Yeah, whatever white won't make sense on a white piece so either black or brown will make much more sense and then immediately clean करेक्ट. it don't let it dry or it's gone ड्राई किया तो yeah गया. सर डिस्ट्रेस लुक अच्छा आ रहा है. it's looking nice Like you can see it's like bone structure. hmm. I want more blue in this. Hmm. I am. See, you can
do like this. Matlab, Yeah, if you're not satisfied, you can. you can always go back and add more Yes, colors and or remove more colors by adding gesso again. I want this to stand out, thoda. Yeah, Like, that ways I feel mixed media is much more forgiving that ways. correct. आप भी वो गियर में अगर थोड़ा ब्लू डालोगे तो आपका वो बुल और पॉप होएगा. मैं जस्ट या वही सोच रही थी कि आई शुड ऑल्सो डू दैट, वो क्योंकि बुल विल पॉप अप कॉपर ऑन ब्लू. बुल पॉपअप नहीं हो रहा है. यस. See guys, and again, we get this question that how are you like thinking that we should add blue, we should add green, etc. But that is something which will come with experience. Till the time you don't start using supplies, you'll not know. Actually, वो blue करने के बाद the owl is looking like popped up. हाँ. Better वो merge हो गया था थोड़ा. तो जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है माई ब्लू Hmm. कम है, Hmm. आई एम गोइंग बैक, So basically, you're bringing back the blue, right? जो merge हो गया. बिकॉज उससे पॉप हो Yeah. रहा है, बिकॉज वी हैव कॉपर Right. गोल्डन साथ में, तो उसके कारण क्या ब्लू अच्छा लग Hmm. रहा है. एंड आई एम मोस्टली बैलेंसिंग इट आउट कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ है Right. तो आई ट्राई तो टू राइट में डाल गो रहे हो तो ऑन लेफ्ट में भी लेफ्ट डालो. ऑल्सो. करेक्ट, करेक्ट. So I think now it Yeah. pops up Now it's yeah. better. Now it looks better. It's not merging up. या क्योंकि उसके ये भी कॉपर थे ना. Hmm. So yeah, I think I'll stop with the Hmm. blue. Hmm. It's looking really pretty. Yeah, Yeah. thank you. So यहाँ पे अच्छे क्रैक्स भी Hmm. आ गए, Yeah. अच्छा दिख रहा है. एंड कॉपर वाज अ गुड आइडिया. मैं ब्राउन करने वाली हाँ. थी. कॉपर से ऐसा लग रहा है कॉपर प्लेक पूरा पटीना हो गया. करेक्ट. हाँ. I always feel that somehow, rather than looking in person, if we see in the camera, it gives us better idea of colors. या मेरे साथ भी होता है Yeah. ऐसा. जब प्रोजेक्ट करती रहती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक बार कैमरे में Right. देख लेती हूँ कैसा दिख रहा है. मेरे साथ तो ये राइट. बहुत होता है. Like even today when I was doing mixed media, मेरे को colors when I was looking in camera मेरे को ज्यादा समझ आ रहा था कि where is it needed, what is needed. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. इसीलिए मैं बार बार ऐसे ऊपर Hmm. करके देखती हूँ कि कैसा दिख रहा है. No, now it is मतलब मस्त हो गया. Hello आई Isha. एम गोइंग विद Thank you Kavita.
अभी पारो का पूरा बर्ड एकदम मस्त ब्लू पॉप हो गया है. Yeah. Yeah, now I'm happy with my owl. पहले वो merge हो रहा था which I was मर्ज not हो रहा था. liking. अब बहुत अच्छा लग रहा है. अभी वो कॉपर डालेंगे तो आई थिंक वो बैलेंस आउट हो जाएगा. हम्म. शाइन कितना मस्त कर या रहा है गोल्डन और मस्त कॉपर. लग रहा है. The gilding flakes was really good idea. Like I never thought to combine gilding flakes with patina. अभी I'm thinking rust के साथ हाँ भी हाँ सही लगेगा. अच्छा हम्म. लगेगा. यस. क्योंकि रस्ट इज मच मोर फॉरगिविंग वैसे विथ गोल्ड एंड ऑल दैट देन पटीना, क्योंकि पटीना में फिर करेक्ट क्लैश हो करेक्ट. सकता है तो. हम्म. बट इफ यू यूज दीज थ्री, वो ये अच्छे लग रहे हैं. हाँ, कॉपर, गोल्डन एंड सिल्वर. या द हाँ, अदर मतलब ऐसा कलरफुल नहीं कलरफुल अच्छा वाला अगर लगेगा. आप जाओगे, आई नो डोंट नो, नो, इट विल नॉट मतलब लुक वो नाइस ना, बिकॉज यू आर एक्सपेरिमेंट. इंट्रोड्यूसिंग न्यू हाँ कलर, एकदम अजीबोगरीब हो जाएगा. बट करेक्ट दिस करेक्ट. थ्री कलर एक्चुअली सिल्वर एंड गोल्ड इज ऑल्सो गोइंग रियली वेल विद द कॉपर. आई वाज थिंकिंग कि पता नहीं क्लैश होगा सो मेनी मेटालिक्स, बट इट इज लुकिंग नाइस. हाँ नहीं, वैसे नहीं हाँ, लग रहा है, मतलब ऐसा मर्ज हो गया, इट लुकिंग नाइस. मर्ज हो गया. करेक्ट. ऐसे देखने पे भी So नहीं लग Asia रहा is saying है. both articles are looking wow. Recently has ordered many supplies from your store. They're just awesome. Thank you, Asia. So Asia, we have explained a lot of things like, we have already crossed our 2 hours mark on the layering. But if you see this particular live from the start, all your queries will be answered because, layering is a lot that we talk about. So this is our second live where we are doing two projects simultaneously, right? So in both the lives, which we did last month and today's, we talk about a lot on how we are layering, how we are creating the composition, etc. So I'll highly suggest go back and look at the lives. Most of your queries will be answered. If you still have queries, you can of course, DM us or comment in the video, and we can definitely take that up in our next live and explain the same. Definitely do check out the previous live and today's live. All the lives, guys, will be saved down as always. So this live will also be saved down on our YouTube as well as it's live on Facebook as well. So it will be saved down on Facebook as well. So guys, I'm mostly done. You can zoom I in think and I'll. show if you don't want to add anything else. अगर कर रहे हो तो. Yeah. नहीं, I don't want to. Okay. थोड़ा सा mint I will. Yeah, I was going to say कि वो जहाँ blue जैसे डालने के लगे. बाद अभी mint is looking little less. But I really feel कि हाँ ऐसा कहीं लगेगा कहीं. ख्याति is driving the project. इसलिए I am not saying. नो 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 नो, वो देख के समझ में आ हाँ, रहा है क्योंकि कि कहीं कहीं वो मिंट टॉप कम हो व्यू गया से है, बट it is मतलब वो clearly visible हो जाता है. हाँ. और वो ना बनाते बनाते Right. होता है कि दूसरे कलर्स ये हाँ हो जाते हैं, कम हो हाँ. जाते हैं. सो इट्स या मेरे ओके. साथ तो बहुत कॉमन एंड यू होता कैन है. ऑलवेज टेल ना, इसमें राइट, क्या नहीं है. मेरे साथ बहुत कॉमन होता है, इसीलिए व्हेन दे से दैट मिक्स्ड मीडिया इज ऑल अबाउट लेयरिंग, इट इज एक्चुअली बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम इट हैपेंस कि हम जो करेक्ट. पहले लेयर्स डालते हैं वो हाइड होते हैं, देन यू नीड टू ब्रिंग देम बैक टू ऐड द पॉप. ब्रिंग देम बैक. करेक्ट करेक्ट. एंड आई एम थिंकिंग मैं बुल फिर से करूंगी, बट आई विल डू ऑफ कैमरा. अच्छा, बुल. काफी बुल टाइम एज इन लगेगा मेरे व्हाट को. यू वांट टू डू. आई वांट टू लाइक चेंज दिस, लाइक वो इफेक्ट वो पूरा खुल के नहीं आ ओके. रहा है. लाइक मॉथ ज्यादा हाँ, पॉप हो रहे हैं, सो so आई you can वांट do कि gilding flakes, you could do. हाँ, तो वही मैं कुछ उसमें दूसरा करने की कोशिश Got it. करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं छुप Right. रहा है. So I'm also done. I'll maybe add a sentiment, a metallic one. Okay. कहीं पे. Uh, but yeah, this is mostly it. Some Both of you finishing. can show like zoomed in for the sake of viewers, एक के बाद एक, so that people can see. यस. तो जो पहले रेडी है मैं उसको मतलब दूसरे बंदे को 2 मिनट के लिए ऑफ कर दूंगी, so they get the complete screen. हाँ हाँ. So do let me know यस. who is ready to zoom in. I can do. Okay. So Sneha, I'm closing you for a minute. श्योर श्योर. यस.
So can you see? Yeah. Yeah, a combination of patina and rust looks yummy. Yeah. Lovely. I mean, the camera was not actually capturing all these details that now I can see through zoom in. Beautiful. I will add some more detailing. मेरे Right. को stamping वगैरह करना है थोड़ा बहुत. Okay. But I am running out of time. माही का 1 घंटे का क्लास अभी 2 घंटे हो गए. No, वो true, बेचारा true. नीचे ही I है. think, but the 12-inch circle is anyways a big thing, matlab big piece. It Yeah, does take time. But the right, effect, I think that's what people wanted to see, and they are able to see how to use rust and patina. So, apna safal raha. right. So yeah, I am loving it. Beautiful details. Guys, she will be posting a video reel on our Instagram, and the live will also be saved down for those of you who want to see. Don't worry, she'll be adding a little bit of more finishing, and then she'll be adding reel. And of course, the live will also be saved down. So you can always go back and look at how she added all those layers and how she created. Yes, Kavita, cracks are also visible, which was something I did not expect with so much layering, but Right. I'm really See, happy. ये अच्छे से here, दिख रहा है. here, Yeah. Even the stenciling and all is also very much visible, the yeah. circuit and all. Looks good. Parvati will wait for your reel. आप चले जाओ, बेचारा Mahi must be waiting for you. Yeah, so I'll just leave. Sorry, Sneha, Yeah, yeah. I'm No not. worries, no Yeah, worries. I'll come back and see the live again. Yeah. Thank you. Thank you so much. Bye. 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 Bye, Sneha. Bye bye. Bye. So, Sneha, I have added you on the screen. Yeah. So now you should be able to show us all the details. Yes. So Yeah, lovely. I love the gilding flakes idea. yes, it had worked Very very nicely nicely. with patina. और वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है. And the pop of copper ke upar the patina is also coming nice. As I Correct. said, this I normally do dark blue first and then I do metallics last. But this other tarika is हम्म. also really good. ऑल्सो ना, क्योंकि क्या होता है कि पटीना और ये रस्ट वाले पेस्ट ना दे आर वेरी, उसमें कुछ पॉपिंग कुछ हाँ. नहीं है. लाइक इट्स वेरी प्लेन Hmm. सिंपल. उसमें डेप्थ बहुत है क्योंकि उसमें दैट इज कोर्स Hmm. एंड ऑल, बट इट्स लाइक प्लेन सिंपल Hmm. कलर्स, राइट. तो इसके साथ वो जो कॉम्बिनेशन है मेटालिक वाला, Hmm. इट विल ऑलवेज Yeah. लुक नाइस. कि कहीं और कहीं एकदम भरने की जरूरत नहीं है, कहीं कहीं रखो कहीं कहीं Yeah. छोड़ दो, इट विल लुक Very नाइस. nice. Like I was thinking black is a very challenging with patina, but I mean I'm really Yeah, I obsessed with know. how it looks right now. आस्क मी. हाँ. बहुत चैलेंजिंग था हाँ. मेरे लिए क्योंकि मैं बहुत कम यूज करती Right. हूँ ब्लैक. मतलब आपने जो मुझे पहली बार भेजा है वही चल रहा I know, I know. I know आपके white कितने खत्म हो गए, but black आपका वही यूज होता है. है. ब्लैक अभी Yeah. तक चल रहा है. सो या, इट हैपेंस कि मेरा माइंड वाइट की तरफ Right. ज्यादा जाता है. बट दिस ब्लैक के ऊपर पटीना इज ऑल्सो गुड आइडिया. So you'll विल also do some यूज इट. finishing and then we'll be finally seeing the reel, यस right? यस, Same आई as विल आई Parvati. विल. Okay. यस. So we can see your या face क्योंकि now. वो मुझे ये अच्छा ही नहीं I लग can रहा बिल्कुल. understand. वो सो थोड़ा मुझे blend हो रहा लगता है, है mix हो रहा है. वो एक ब्लेंड हो रहा है. तो आई थिंक इसमें गिल्डिंग हाँ, कुछ gold करते हैं. gilding करोगे तो तो या ऐसा कुछ silver plus gold it या will look कुछ तो. nice. करेक्ट Even करेक्ट silver will look nice. करेक्ट Hmm. करेक्ट. सो देखती हूँ मैं कुछ अलग करूँगी, बट एज यूजुअल आई पहले जैसो कर Yeah. दूंगी पूरा, सो दैट Black मेरे को base हो वापस जाएगा, एक फिर you प्लेन can बेस start मिले. from scratch. हाँ, Got it. आई कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. तो दैट इज अ गुड हैक कि नहीं पसंद आ रहा है जैसा कर Right. लो. ठीक है, we can see your सो face एज. now. हम wait कर रहे हैं ओह यस. मतलब. So, yes, guys, this was today's live. Kavita, indeed, mixed media is a lot of patience and layering, guys. Trust me, like even I have been doing something similar today for a future sample. It took me 3 hours and I was just layering things. So, मैं जब बोल रही हूँ कि लोगों ने 2 घंटे में इतना कुछ कर लिया, so they have been very quick about it. मेरे को तो 3 घंटे लग गए. तो
नहीं नहीं लगते लगता है। हैं। मैं बट थोड़ा सा प्रेप भी हाँ कर लिया था ना, पर एंड हाँ, end to लगेगा। end 3 to 4 hours is very much common in a small करेक्ट, piece. Like bigger piece which Parvati was doing 12 inches, it may take even more. Like एक hers मिनट, was a bigger piece. करेक्ट। बट उसने अच्छा दिमाग लगाया कि शी यूज बिगर Mold, so मोल्ड्स सो right. दैट, तो उसका वो कवर अप जल्दी हो जल्दी गया। हो गया। आई मेरा छोटा था तो मैंने छोटे हाँ, यूज किए, बट दैट इज ऑल्सो ट्रिक कि आप अगर बड़ा बेस यूज कर रहे हो तो बड़ी चीजें बड़ी यूज चंकी, करके अच्छे से फटाफट हो हाँ, जाता तो यू है। I कैन have a lot of उससे smaller कवर। molds, so मेरा बड़े में भी बहुत सारे मेरे छोटे छोटे पास छोटे छोटे पूरा composition बनता है। मेरे पास बड़े एज अ बड़ा फोकल पॉइंट कुछ नहीं है, बट दिस आउल लुक Yeah, yeah, वेरी very नाइस nice. पार्वती I ने like यूज that किया grungy है। frame also. जो मैंने भी इसके लिए यूज किया था because this was a bigger piece. Like it's a big diary. Like A5 हाँ, से भी बड़ा है। तो मैंने ये grungy ये frames बहुत that she सुंदर। had used, ये बड़ा frame है। तो that I had used, फिर ये हाँ, बड़ा wing डाल दिया दिस इधर, इधर करेक्ट, ये वाला wing and then this label. तो वो क्या 3-4 बड़े पीसों से फटाक से कवर हो जाता है। Then you don't have to worry that करेक्ट। much. वो मेरे को ना बिल्कुल ऐसा, जो शुरू में पटीना जब चला था और ट्रेंड जब Right. शुरू हुआ था, मुझे बिल्कुल वैसा ही करना था। आई वाज लाइक नहीं, मेरे को बिल्कुल बेसिक वाला करना है जो मैंने हाँ, सीखा है। नहीं, but that's really like the hacks that you shared, and like live हाँ, में a lot of times we don't talk about it, but I really like the करेक्ट, gilding flakes that we tried turned out really well. Then we were able, like, करेक्ट, because I know like Paro does a lot of rust plus patina. Personally for me वो मेरे लिए हाँ। काफी daunting हो जाता है, वो इतना easy नहीं रहता है। बट जैसे मैंने जो सीखा था ये जो हाँ फुटवेयर से, इसमें ही यूज्ड बोथ, मतलब रस्ट भी है और हाँ पटीना भी है। तो उसने ये सिखाते टाइम यही सिखाया कि पहले हाँ। रस्ट यूज तो कर ये लो क्या होता एंड है, देन बहुत बार गो है ना फॉर। तुम वीडियो देख के नहीं समझता है, तो तुम जब नहीं, करोगे हाँ, ना, मुझे हाँ, लग रहा है मैंने उल्टा किया हाँ, था। और मेरे को याद है मैंने पटीना भी पहली बार है ना पूरा मेटालिक कर दिया था और फिर कलर्स डाले तो वो समहाउ मजा नहीं आ रहा था। लेकिन आपका क्यों मजा आया, हाँ, क्योंकि यू हैव अ ब्लैक जेसो, आई डिड व्हाइट जेसो, ब्लैक। फिर मेटालिक, फिर वो। तो समटाइम्स तो इसमें आई हैव यूज्ड व्हाइट हम्म जेसो, जब मैंने सीखा है उसमें पूरा पूरा वाज ना व्हाइट जेसो। व्हाइट, फिर उसके ऊपर किया है। पर ब्लैक में आई वाज लाइक बहुत सोच रही थी मैं, मतलब ऑफ कोर्स यू नो क्या या पागलपन चल रहे थे। यस, मैं फिर मुझे स्टेप्स मैंने सोचे कि नहीं, मुझे पहले कॉपर कर लेना हाँ चाहिए, नहीं, बट दैट तब रियली उसको। लाइक इट स्टैंड आउट बिकॉज ऑफ दैट पर्सनली, मतलब वो सही हुआ। ब्लू से बेटर वो पर्पल, वो कॉपर करेक्ट, से हाँ, चालू करना वाज अ राइट डिसीजन. So करेक्ट, guys, I hope you enjoyed सीरियसली। so many technical things we talked about in the Rust and Patina. I feel बहुत technically हम लोग आज कर रहे थे, but I think that's good for people who are especially beginners, so that you don't have to do the mistakes that we did. I know I ruined a couple of projects doing such kind of silly mistakes. And मी टू। there were nobody who told us कि तुम गलत कर रहे हो, right? So now you already know कि ये करेक्ट, गलत है, right? Follow this recipe, A step, B step, C step, D step, and you will be good. मुझे तो कभी भी अच्छा नहीं लगता प्रोजेक्ट, वो देख देख के देख रहे, हाँ ठीक ही है, हाँ अच्छा है, ठीक है, हो रहा है, बन रहा है, अच्छा है, अच्छा करके फिर देन आई Never, लाइक माइंड both मेरा। the projects were really good today. I love the gilding flakes idea. Like, मेरे को हर बार नया नया सीखने मिलता है. So I'm very happy that way कि मेरे को सीखने मिला. As यू कविता said, वो शुड यूज दैट। टूथब्रश हैक बहुत सही था. मतलब मेरे तो पूरी उंगली हाँ, चमकीली चमकीली हो जाती है. मुझे वो बिल्कुल हाँ अच्छा नहीं हाँ, लगता, वो और राइट, निकलता नहीं निकलता है है वो, मेरे। 3-4 दिन तक रहता है. हाँ, मैंने बोला टूथ ब्रशेस, और वो उसको स्क्रैप भी करना हाँ, पड़ता है ना, घिसना पड़ता तो वो उसके ब्रिसल्स भी अच्छे है. हाँ, काम आते हैं, that's सॉफ्ट भी। nice. Thank you, Shalu. तो She's यस, saying enjoyed a lot. Thank you, guys. We have already crossed थैंक almost यू। सवा 2 घंटा. आई So we will stop the live now. As always, this live will नो। be saved down, so you can see from the start for those of you who missed out on how we did layering, what supplies we used, etc. And of course, Instagram pe we will be posting reels, both Paro and Sneha, once it's done. And yeah, I'm tired. I've been speaking for 2 hours. वो लोग बेचारे काम आई कर रहे थे, लव मैं बोल योर रही थी, इयररिंग्स। लेकिन अभी मैं थक गई हूँ. मैं बोलती हूँ आपके, मेरे को कान के बहुत अच्छे लग Thank रहे you, thank you, thank you. Sarojini Zindabad. हैं, वेरी वेरी प्रिटी।
And it's going with your like Yeah. Indian I'll look. tell you the price, you'll be surprised. I'll WhatsApp you. I don't want to sound cheap here. नहीं मत बताना मत बताना थैंक यू गाइस मुझे बुरा थैंक यू लग गाइस अभी हमारी तो चलती रहेगी बट थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लाइव थैंक यू स्नेहा थैंक यू पार्वती को भी मैं मिस कर गई शी विल बी लुकिंग एट इट सो शी विल नो and thank you guys once again for making this live very fun. We'll see you in the next live next month with something interesting, hopefully with our new supplies if by that time the release is done. So I hope you are excited. excited. Thank you guys. Bye. Bye. Bye bye. Give me a minute.